check. Hello, check. Yeah, very good morning, my dear friends. Guys, good morning. Right, come on. So, friends, we are dealing with a chapter called Introduction to Income Tax. In that, lot of interesting points we have covered, but we just have few more small points to talk, which we'll complete today. Are we ready, my dear friends? So, today we'll complete that topic, and if time permits, we'll also start one more interesting topic. Are we ready? Good. Come on, my dear friends, let's once quickly, what will we do? Quickly we will revise, and after that we'll start. Are we ready, everybody? Dosto, chalo beta, come on, tell me, what is section 27? Assessee. Assessee means any person liable to pay tax and includes every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or income of any other person in respect of which he is assessable. Second point, every person who is deemed to be an assessee. Third point, assessee in default. Assessee in default covers three cases. Person who has not done TDS, person who has done TDS but not paid to government. Number three, person who failed to pay advance tax. Barabar hai na beta? Good. What is section 29? 29 is assessment year. Dosto? Good. What is section 225A? And I'm sure we remember what is India. Territory, territorial waters, seabed and subsoil underlying such water, continental shelf and exclusive economic zone, airspace above territory and territorial waters. Clear enough? Good. What is section 231? 234. Previous year. Section 3. Section 4 beta. Chargeability section. What does chargeability section say? Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. How many exceptions are there? 5. What are the 5 exceptions? Come on. Shipping business of non-resident, person leaving India permanently or for long time, AOP, BOI, AJP, formed for short duration or purpose, persons likely to transfer property to avoid tax, discontinued business. Clear enough? Everyone? Good. Then what is the answer for section 87A? Rebate. In optional tax regime, it is only for resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs. And rebate is tax payable of 12,500, whichever is lower. And in default tax regime, it is applicable only to resident individual whose total income does not exceed 7 lakhs. And rebate is tax payable or 25,000, whichever is lower. And one special point there is that even though total income is more than 7 lakh, still rebate is possible if extra tax is more than income beyond 7 lakhs. याद है ना बेटा? Problem भी solve करे थे हम? Good, very good. What is section 288A? Rounding off of total income. 288B, rounding off of tax payable. We'll round off to nearest multiple of 10 rupees. Beta bolo. Good. What is section 115BB? अरे 30% किसका यार? Casual incomes, winning from betting, gambling, lottery, horse racing, card games, or any games of any sort, straight away tax at what rate? 30%. अरे कितने क्वेश्चन सॉल्व करे यार अभी तक? अभी तो मतलब टू मच हो गया. 4 lecture. Today is almost our 5th lecture. So कितना करे क्वेश्चंस अपन already? Good. Next, what is the answer for section 115BBJ? Net winning from online games will tax at the rate of 30%. Good. What is section 112? Long-term capital gains का general rate है कितना बेटा? 20%. What is section 112A? Long-term capital gains on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid will tax the rate of
10% on amount exceeding. Same scenario, instead of long term, if it is short term, we'll tax at the rate of 15%. But here there is nothing called amount exceeding 1 lakh. याद है ना बेटा सब कुछ? अभी तक जो पढ़े पूरा क्लियर है क्या? Everyone, sir? चलो, let's talk some special points which are left out. Then we'll complete. Are we ready? चलो बेटा, आप मुझे बोलो एक चीज. We learned there is something called whenever there is tax, HEC will always come at the rate of. That is mandatory. What is HEC full form? Health and education. Exactly. Apart from HEC, my dear friends, HEC तो हमेशा आएगा, but there is something called surcharge, which will come only to high income group people. बराबर है बेटा? Surcharge क्या percentage उससे मालूम पड़ जाता है कि भाई साहब का income कितना है. बराबर है ना? Everyone. Good. And in surcharge, my dear friends, we have got two interesting stories. That is in case of default, in case of optional. In default, the possibility is what? 10%, 15%, 25%. In optional, 10%, 15%, 25%, 37% also can come. 37% concept is not there in default. It is there only in optional. बोलो ना बेटा, सबको क्लियर है क्या? चलो, अभी आपको एक स्पेशल पॉइंट पढ़ाऊंगा which I did not teach you yesterday because I wanted you to first to become perfect on surcharge, then learn that special point, which I'll tell you today. Ready? 10% का कहानी कब आएगा? पूरा का पूरा आंसर चाहिए. If the total income, including dividend and capital gains taxable under section 112, 112A, 111A, is more than 50 lakhs, does not exceed 1 crore. 10%. बराबर है ना? Second point क्या है? If total income, including dividend and capital gains taxable under section 112, 112A, 111A, is more than 1 crore, does not exceed 2 crores. What is the rate? Excellent. यहां तक सबको क्लियर है? अब जब 25% का कहानी आएगा, वहां पे क्या लैंग्वेज है बोलो? Can you repeat once again? Come on, slowly. If total income, excluding dividends and capital gains, which are taxable under section 112, 112A, 111A, is more than 2 crores. More than? Does not exceed 5 crores. Then the rate is 25%. If it is more than 5 crores, it is 37% in case of optional. Default में 37% का concept ही नहीं है. Default में highest surcharge rate है 25%. दोस्तों, यहाँ तक सबको clear है? Everyone, sir? Now listen very clearly, one special point. What is that? Listen. I'll give an example for this. Sir, let us say there is long-term capital gain on sale of land, which is 60 lakh. How much is the figure? 60 lakhs. ठीक है ना बेटा? And there is other income 1.7 crore. Total कितना हुआ बेटा? 2.3 crores. That means other income मतलब it is not dividend, it is not capital gains. Other income other than dividend and capital gain. समझ में आने लैंग्वेज आपको? बेटा बोलो, टोटल फिगर कितना है? 2.3 crores. बराबर है क्या? अच्छा, I'll do a small change. Wait. This I'll make it as 2.3 crores. Total I'll make it as 2.9 crores. अब बोलो surcharge rate क्या आएगा? 25%. Whatever I wrote on the top, this example is matching that concept, everybody. बोलो बेटा. Come on, read that line once again. If the total income, excluding dividend and capital gains taxable under section 112, 112A, 111A, is more than 2 crore, does not exceed 5 crore. Then what is the surcharge rate? मतलब ये other income जो 2.3 crores है, it is other income excluding the dividend and capital gains is more than 2 crore. Then what surcharge rate will come is 25%. Yes or no, friends? But the special point what they told in the law is what I'll tell today. Listen to that. Very clearly listen. So first of all, what will be the tax on
60 lakh at the rate of 20% under section 112. बराबर है ना? Which comes to 12 lakhs. So speak out. And let us say, we'll assume for a second, we are under default tax regime. Default to optional हो, फिर भी 25% ही है ना यार. Friends, whether it is default or it is optional, it is 25% only in this example. ठीक है? What is the tax on other income? What is other income? बोलो बेटा. 2.3 crores. 2.34 के टैक्स कितना आएगा? 15 लाख तक तो 1.5 लाख आएगा. पक्का? चेक कर लो. 2 crore 15 lakhs into 30%. 2 crore 15 lakhs into 30%. कुछ फिगर आएगा ना? उसको ऐड करो 1,50,000. 66 lakhs उतना ही आएगा क्या? एग्जैक्टली. सर समझे क्या? आपको कैलकुलेट करना है तो कर लो. अप टू 3 लाख नील, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15. आंसर तो यही आना है. बिकॉज 15 लाख तक 1.5 लाख आता है टैक्स. आपको ऑलरेडी पता है ये चीज. 15 लाख जब 1.5 लाख आएगा, 2 करोड़ 15 लाख पे 30% निकालो, प्लस दैट 1.5 लाख ऐड करो. आ गया ना आंसर? फ्रेंड्स, वी हैव टू बिकम फास्ट नाउ. वी हैव टू बिकम क्विक. गुड थिंग्स विल टेक टाइम, बट नाउ वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. क्लियर नो? ये समझ में आया सबको? टोटल कितना है? 78 lakhs. बराबर है ना बेटा? बेटा बोलो मुझे. Don't calculate. Hold on. We have to add something called surcharge. क्या रेट आएगा बेटा? बोलो surcharge क्या रेट आएगा एग्जाम्पल में? 25%. Correct? No, speak out. But the special point, which I did not tell you yesterday, but I want to tell today, is because something like this. Yesterday I wanted focus was first let's become perfect in the rates. But today it's all special points. Listen, the special point what they told in the law is surcharge will be at 25% only, but this 25% will be on 66 lakhs. And separately, we will also add surcharge on 12 lakh at the rate of 15%. What they told in the law is, in case of dividend, in case of what? Dividend, and in case of capital gains taxable under section 112, 112A, 111A, in that cases, the maximum rate of surcharge is only 15%. I repeat once again. Listen to me very clearly. Sir, 10% एक रेट है, 15% एक रेट है, उसके बाद 25 है, बट ऑप्शनल में तो 25 भी है, 37 भी है. बराबर है ना बेटा? Now the point to be noted is that in third point or fourth point will come into picture when the total income excluding the dividend and capital gains taxable under section 112, 112A, 111A is more than 2 crores, then only 25% will come into picture. Correct? No? Law is telling 25% surcharge is correct, but in case of dividend, in case of capital gain, the maximum rate of surcharge is 15%. मतलब अब जब टैक्स निकालेंगे, जितना टैक्स 112A, 111A, 112, 112A, 111A और डिविडेंड का रिलेटेड है, उस टैक्स पे आप 15% लगाओ. अदर इनकम पे जो टैक्स है उस पे 25% लगाओ. You're getting what I'm saying? Sir, this special case will come into picture only when 25% is coming into picture. If it is 15%, ऐसा अलग से करने की जरूरत ही नहीं है ना यार. सर अगर 10% का टैक्स रेट है, 10% सरचार्ज है, ये सब करने की जरूरत नहीं है. 15% सरचार्ज है, ये सब करने की जरूरत नहीं है. दिस ऑल स्टोरी विल कम ओनली व्हेन 25% or 37% is coming into picture. So indirectly what I'm trying to tell you is, one line I will tell. Now in one line I will tell, in case of dividend, in case of capital gains, taxable under section 112, 112A, 111A. In these two cases, the maximum rate of surcharge is 15%. 25% surcharge, 37% surcharge will not apply to the tax on dividend, and it will not apply to the tax on capital gains under section 112, 112A and 111A. Clear na beta? Intentionally I did not tell you yesterday, because one day only if you take everything you will get confused. That's why I kept quiet. ठीक है यार, कल करेंगे, कोई बात नहीं. समझे क्या बेटा? पहली बार अपन कुछ नया सीख रहे हैं. 10%, 15%, 25%, 37%, कुछ नया चीजें दिमाग में जा रहा है.
फिर आपको क्यों कंफ्यूज करूं मैं, इसलिए मैं चुप बैठ गया। अभी समझ में आ रहा है सबको? एवरी वन सर, इज दिस वर्किंग क्लियर? मतलब 66 लाख पे भी सरचार्ज आ रहा है, 12 लाख पे भी सरचार्ज आ रहा है, बट फर्क इतना है कि 66 लाख पे 25% आएगा, 12 लाख पे एग्जैक्टली। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एवरी वन सर, कैन यू टेल द फिगर वंस? टोटल क्लोज दिस आंसर। 66 lakhs का 25% मतलब 1/4 है 33, 16,50,000 करेक्ट है। 12 लाख का 15% है 1,80,000 टोटल 81 lakhs है, 18 lakhs, 96 lakhs। अरे टोटल पूछा यार मैं। To that I will add which is at the rate of 4%. बराबर है ना बेटा? बोलो कितना है? 3 lakhs 385,200 correct no? Then 1 crore 1,15,000 1,00,15,200 बराबर है क्या एवरीवन सर? नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन है, बोलो सोच के बोलो आंसर अभी। सर लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर इज वन पर्सन मिस्टर ए, ओके, एंड ही इज पेइंग टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ठीक है ना बेटा? अब इसका सीन क्या है देखो, हिज इनकम इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, अंडर सेक्शन 112 is let us say 50 lakh। ठीक है ना दोस्तों? and let us say for example other income is 60 lakh, total 1.1 crore, 1.1 crore। come on, let's calculate tax, come on। tax on long term capital gains will be at the rate of 20%, which comes to 10 lakhs। दोस्तों what is the tax on other income? It is 60 lakh, no? 60 lakh up to 10 lakhs it is 1,12,500, 50 lakh is 13%, which will be 15 lakhs, 16 lakhs 12,500। हो है ना? 10 लाख तक 1,12,500 आएगा यार, बैलेंस 50 लाख पे 30% विच इज 15 लाख, 15 लाख प्लस 1,12,500 विच इज 16,12,500 वही आएगा। अब कितनी देर भी करो वही आएगा। क्लियर है ना? कैन आई प्रोसीड नाउ? टेल मी द टोटल नाउ। व्हाट इज द टोटल फिगर? 26,12,500। टू दैट आई नीड टू ऐड सरचार्ज एट व्हाट रेट? बोलो बेटा इस केस में ये क्वेश्चन में 25% आएगा क्या? सर इस क्वेश्चन में ये केस में 25% आएगा क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज टोटल इनकम अदर देन डिविडेंड कैपिटल गेन्स इज नॉट मोर देन 2 crores। तो 25% आएगा क्या? तो क्या आएगा? 15%। डायरेक्टली आई कैलकुलेट 15%। I will not bifurcate, मतलब 10 लाख पे कितना, 16 lakhs पे कितना, I will not differentiate, because I'll differentiate only when, अरे कैलकुलेटर छोड़ो यार, मैं समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट। I will bifurcate only when 25% is coming into picture. If it is, or 37% is coming into picture. If it is 15%, directly I'll calculate. If it is 10%, directly I'll calculate. ये एग्जाम्पल क्यों दिया सबको समझ में आया क्या? एवरी वन सर पक्का स्पीक आउट। कितने? 3 लाख 9,000, 3,91,000, 30, 30,04,375। I will also add HSA at the rate of 4%. 1 lakh
क्या बेटा, कुछ डाउट है क्या आपको? एनी कंसर्न? सरचार्ज का रेट्स क्या है बोलो? एग्जैक्टली 10 will come when 50 lakh to 1 crore. Exactly. When 15 will come? इस क्वेश्चन में कितना है? आई थिंक यू हैव योर आंसर. आज सुबह सुबह आते मैंने रिवाइज क्यों कराया? उसके लिए तो रिवाइज कराया. फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है? टोटल इनकम इंक्लूडिंग इज मोर देन 50 लाख, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़. सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? Total income including is more than 1 crore, does not exceed 2 crores. Excluding language is only in third and fourth case, 25 and 37. समझे क्या? Done? Can I proceed? Thank you. Total कितना बेटा? 13 lakh, 31 lakhs? Okay. आई होप वी आर क्लियर विद दिस. बोलो ना बेटा, कुछ तो बोलो बेटा प्लीज. अभी एक मस्त क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लास्ट, उसके बाद हम लिख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट को. ठीक है, रेडी? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ आई शो यू सम ट्विस्ट इन द टेल. द ट्विस्ट इन द टेल इज समथिंग लाइक दिस. ट्विस्ट इन द स्टोरी. Yeah, what is the twist in the story? Now listen. So let us say a person has got dividend income of 40 lakh. क्या है बेटे? Other income. What is that word? Other income 2.3 crores. Total 2.7 crore. बराबर है ना? And let us say he is paying tax under optional tax regime. अब मुझे बोलो सरचार्ज रेट क्या आएगा इस केस में? हाँ? Because total income excluding dividend and capital gains is more than 2 crores. Does not exceed 5 crores man, 25% only, no. अरे बोलो ना बेटा. बट 25% सरचार्ज किस पे लगेगा? जो 2.3 करोड़ पे जो टैक्स है, 2.3 करोड़ पे जो टैक्स है उस पे 25% लगेगा, और 40 लाख पे जो टैक्स है उस पे 15% लगेगा. तो वापस बोल रहा हूं, 2.3 करोड़ पे जो टैक्स आएगा उसके ऊपर 25%, 40 लाख के ऊपर जो टैक्स आएगा उसके ऊपर 15%. Because in case of dividend, in case of capital gains, the maximum rate of surcharge is 15%. Clear, no? Student is asking, sir इसमें twist क्या है? जो आप पढ़ाए वही तो बोल रहे वापस. अब twist क्या है देखो. सर जो long term capital gain है 112 में what is the rate of tax? 20%. In 112A, what is the rate of tax? 10% on amount exceeding 1 lakh. 111A में टैक्स रेट क्या है? 15%. They are all called as special tax rates. Correct, no? But now, what is this word? Other income के ऊपर क्या लिखा है बेटा? Other income के ऊपर क्या लिखा है? Dividend. Other income के ऊपर लिखा है dividend. Dividend का कुछ स्पेशल टैक्स रेट मैंने आपको पढ़ाया क्या? बोलो ना यार. डिविडेंड का कुछ अलग से स्पेशल टैक्स रेट आपको पढ़ाया क्या मैंने? लेट मी टेल यू, डिविडेंड इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स ओनली. व्हेन आई से नॉर्मल रेट, व्हाट डज दैट मीन? व्हेन आई से डिविडेंड इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, व्हाट डज दैट मीन? स्लैब रेट. करेक्ट, नो? नाउ लिसन, nobody should talk, just listen, come on. Everybody concentrate. 2.7 crores na? So this entire 2.7 crore is taxable at normal rates. समझ रहे क्या मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? Entire 2.7 is taxable at normal rate because there is no special rate of tax for dividend. सर प्रीवियस एग्जाम्पल में फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में इतना ही फर्क है बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये इसका 20% टैक्स रेट है.
बट अभी का जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें 20% टैक्स रेट नहीं है, वो नॉर्मल रेट वाला ही है। डिविडेंड का कुछ अलग स्पेशल रेट नहीं है। डिविडेंड इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स। आर वी क्लियर विद दैट एवरीबॉडी? नाउ लिसन, व्हेन आई से टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, हाउ डू वी कैलकुलेट टैक्स? टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन, क्विकली स्पीक आउट। अप टू, अरे यार जल्दी बोलो यार फटाफट। 2.5 lakhs nil, 2.5 lakh to 5 lakh at the rate of 5%, which comes to 12,500, and 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20%, which comes to 1 lakh. बराबर है ना? Next, above 10 lakh at the rate of 30%, which comes to 2.6 crore into 30%, 78 lakhs. Total 79 lakhs 12,500. ये हो गया मेरा टोटल टैक्स। दोस्तों बोलो, यहां तक सबको समझ में आया क्या? सो व्हाट इज आंसर नाउ? टोटल टैक्स इज 79 lakhs 12,500. So my total tax is 79 lakh 12,500. That is before surcharge and before HEC. अभी मुझे क्या ऐड करना है? बराबर है ना? बोलो बेटा, सरचार्ज का रेट क्या है? 40 लाख पे 15% क्या? 40 लाख पे 15% नहीं है। 40 लाख का जो टैक्स है उस पे 15%। 2.3 करोड़ का जो टैक्स है उस पे 25%। अरे समझ रहे क्या मेरी बात? बेटा कैलकुलेटर छोड़ दो 2 मिनट, ठीक है? 40 लाख पे जो टैक्स आएगा उसके ऊपर 15%, और 2.3 करोड़ पे जो टैक्स है उस पे ऊपर 25%। स्पीक आउट गाइस। सर इन दिस क्वेश्चन डायरेक्टली आई सॉल्व डूइंग व्हाट? 12 लाख जो टैक्स आया उसको ऊपर 15%, 66 लाख जो टैक्स आया उसको ऊपर 25%। डायरेक्ट कैलकुलेट किया या नहीं? बोलो बेटा, स्पीक आउट। अभी इस केस में मेरे पास 40 लाख के ऊपर टैक्स कितना है, 2.3 करोड़ के ऊपर टैक्स कितना है? बाइफर्केशन है क्या? बोलो। बट प्रॉब्लम ये है कि सरचार्ज जो है 40 लाख का जो टैक्स है उस पर 15% लगाना है, 2.3 करोड़ का जो टैक्स है उसके ऊपर अपने को चार्ज करना है 25%। बट आई डू नॉट हैव ए बाइफर्केशन। यू गॉट द इशू? यू माइट आस्क, सर ये इशू पहले क्यों नहीं, अभी क्यों आया? अरे लॉजिक सिंपल है यार, पहले क्यों नहीं आया मतलब पहले स्पेशल रेट ऑफ टैक्स था, इसलिए उसका टैक्स अलग से निकाले हम लोग, डायरेक्ट कर दिया अपन सरचार्ज उधर। इधर स्पेशल रेट नहीं है, वो भी नॉर्मल रेट है। फ्रेंड्स, आर वी अंडरस्टैंडिंग? इज दिस पॉइंट गोइंग स्ट्रेट इनटू योर ब्रेन्स? 100% माय डियर फ्रेंड्स। कम ऑन, कैन समबडी टेल लॉजिकली? ये टैक्स का कुछ नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। लॉजिकली हाउ डू यू अप्लाई 15%? हाउ डू यू अप्लाई 25%? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके जवाब दो। क्या बेटा? वंडरफुल। हु इज दैट? एक्सीलेंट, दैट इज द आंसर। नाउ व्हेन आई हैव टू ऐड सरचार्ज, आई हैव टू ऐड सरचार्ज एट व्हाट रेट? सबसे पहले सरचार्ज एट व्हाट रेट? 25%। 25% on the tax related to 2.3 crores. So what is the tax related to 2.3 crores? Will be 79 lakh 12,500 into 2.3 crores divided by 2.7 crores. Simple logic यार, रेशो यार, पूरा इतना है तो इसका इतना, इसका कितना है यार? एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट करें ना आप लोग। Now student is telling, sir 2.3 by divided by 2.7, आप और कम करते जाओ उसको, bring it in simplest form. This is not mathematics class. Correct, no? And some dangerous students will be there who will do 79 lakh 12,500 into 2.3 crore. Sir कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है सर। भाई पहले डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते ना, ऑप्शन है ना लाइफ में। कैलकुलेटर छोड़ दो ना 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। सर ये समझ में आया क्या पहली बात आपको? बोलो प्लीज। आई विल आस्क यू क्वेश्चन नाउ, यू डोंट आस्क मी, आई विल आस्क यू नाउ। इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं करे? क्योंकि डायरेक्ट पता था अपने को कैपिटल गेन का टैक्स कितना है, तो उसमें 15% लगा दिया अपन, बाकी 25% लगा दिए। बट इस केस में वो प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि डिविडेंड का भी
नॉर्मल टैक्स रेट है, बट जो डिविडेंड का टैक्स जो है उसमें 15% लगाना है अपने को। तो कैसा निकालेंगे उसका? जितना टोटल टैक्स आया उसमें प्रोपोर्शनेटली लेंगे। हाउ टू गेट द प्रोपोर्शन? बेस्ड ऑन रेशियोज। फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, रेशियोज, प्रोपोर्शंस एंड इंडिसेस। लॉग से क्या, ठीक है जो भी है छोड़ दो ना यार। सर क्लियर है क्या? नाउ व्हाट स्टूडेंट विल टेल, सर आई एम डायरेक्ट एंट्री सर। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, ये तो बेसिक कॉमन सेंस है यार, समझे ना ये पॉइंट दोस्तों? चलो अब ले लो कैलकुलेटर हाथ में और बोलो कितना फिगर है। क्या क्या 57 लाख कैसे आ सकते उतना यार? अरे सरचार्ज फिगर बोलो यार मुझे, सरचार्ज फिगर बोलना बोले तो रही 16 lakhs 06। अरे समझे क्या बेटा? दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। आई थिंक यू गाइस अंडरस्टूड नाउ व्हाई आई डिड नॉट टीच दिस यस्टरडे। समझे क्या? कल ही पहली बार लाइफ में पढ़े सरचार्ज क्या होता, और ये सब एक ही दिन पढ़ा है ना, हो गया। जितना टैक्स में मजा आ रहा है, जितना सुबह सुबह आपका एनर्जी हाई है, सब खत्म हो जाएगा एक दिन में। इसलिए बहुत प्लान्ड वे में पढ़ाते हैं, ठीक है? आप बोलो सरचार्ज एट व्हाट रेट? 15%। किसके ऊपर? 79 lakhs 12,500 into 40 lakh divided by 2.7 crore। अरे समझ रहे क्या वर्किंग? बोलो 1 lakh 880 833। क्या बात है, क्या खतरनाक नंबर है इस बार। चलो निकालो टोटल। 97 lakhs 402। Is the story over? At the rate of H is at the rate of 4%। बोलो बेटा कितना है? 3 lakhs 95936 total 1 crore 1 lakh 3 to wrong answer 340। and whenever we are doing like that, what we have to write here is tax liability ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा राउंडेड ऑफ as per section 288B। don't tell A, it is B, it's not A, it is B। A is for income, B is for tax। if you look at your ICA material, or if you look at your past exam questions, or if you look at RTPs, MTPs, whatever you look at, this is how they present, correct? No? and that is the reason why I tell always with section number। प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न विद सेक्शन नंबर। सीएफ में तो एग्जाम में लिखना मैंडेटरी है, इंटर में नहीं लिखे तो भी मार्क्स आएगा, बट लिखेंगे तो उनका इंप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे अपने को पढ़ने के लिए सेक्शन नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो प्लीज नो फीलिंग्स एंड इमोशंस, ओनली सेक्शंस एंड सबसेक्शंस। थैंक यू वेरी मच। क्लियर है क्या बेटा? नाउ वन स्टूडेंट गॉट वन क्रेजी डाउट। स्टूडेंट इज आस्किंग सर ये सब कुछ तो अच्छा है, मुझे एक छोटा सा डाउट है। आई एम आस्किंग व्हाट इज दैट माय डियर फ्रेंड? स्टूडेंट इज आस्किंग सर ये सरचार्ज का सेक्शन नंबर कौन सा है, आप वो नहीं बताया हमको, सब कुछ बताए। इट इज नॉट गिवन बाय सेक्शन, इट इज गिवन बाय फाइनेंस एक्ट इन केस ऑफ ऑप्शनल। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इट इज गिवन बाय 115 BAC। ऑलरेडी पढ़े ना, जिधर टैक्स का कॉन्सेप्ट है उधर ही सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है। सरचार्ज कुछ अलग सेक्शन नहीं है वो। समझा क्या? आर वी क्लियर विद दिस? फुल क्लैरिटी ऑन सरचार्ज नाउ 100%। एंड एनीवेज yesterday we already completed that concept called marginal relief। वो तो क्लियर है ना सबको? when extra tax is more than extra income because of surcharge, and that will happen only when income is slightly beyond the limit of surcharge। दोस्तों
इसमें किसी को कुछ कंसर्न है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो आई स्टार्ट। क्लियर? बेटा आप इतना कंफ्यूज क्यों हो? मार्जिन लिफ्ट क्यों आएगा बेटा? इसमें कितना फिगर है? 2.7 करोड़ है। टू पॉइंट फोर में भी नहीं आता, 2 करोड़ 40 लाख में नहीं आता है। 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 3 लाख, तभी मार्जिन लिफ्ट का आने का पॉसिबिलिटी है। जहां पे 4-5 लाख का फर्क है ना, वहीं पे मार्जिन लिफ्ट आता है। जहां पे 10 लाख 20 लाख 30 लाख का फर्क है लिमिट से, तो नहीं आता मार्जिन लिफ्ट। अगर 2 करोड़ 2 लाख होता, 2 करोड़ 3 लाख होता, फिर देखना ही पड़ता। और वो लेवल का क्वेश्चन आपको इंटर में नहीं पूछते, डोंट वरी। ठीक है, डन। ऑल हैप्पी फेसेस? कैन वी प्रोसीड? थैंक यू। चलो, पुट द हेडिंग स्पेशल कॉन्सेप्ट इन सरचार्ज। क्या बेटा? अरे कल रुको 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 जरा, रुको जरा। कल हम लास्ट क्या किए थे? वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, और उसमें एटी टीटी ये भी था, और मैंने आपको बोला था एटी टीटी और टीटी भी लिखाऊंगा आपको, बराबर है ना? कल मैंने पढ़ा, आपको याद है क्या? या लास्ट में 11 बजते स्विच ऑफ कर दिया आप टैक्स को? वैसा तो नहीं है ना? हाँ बोलो सच्चा। एटी टीटी है क्या था? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। कितना है डिडक्शन? इंटरेस्ट और 10,000 whichever is lower. What is section 80 TTB? Interest on savings account or deposit account for resident senior citizen. Who is senior citizen? 60 and students are seeing me and telling 60 and above. ठीक है? हाँ. What is the deduction? इंटरेस्ट और 50,000 whichever is lower. दोस्तों याद है ना बेटा? बोलो ना दोस्तों। डन। वो पॉइंट लिख लेते पहले, फिर अपन ये लिखेंगे। इधर था वो। हाँ डन। आपने स्पेशल पॉइंट सरचार्ज हेडिंग लिख दी है क्या ऑलरेडी? नहीं लिखे ना? ठीक है, थैंक यू। नोट करके लिखो, नोट। नोट राइट डाउन। As per section 80 TTA, as per section 80 TTA, comma, interest on savings account, interest on savings account, interest on savings account in bank or post office. Interest on savings account in bank or post office. Interest on savings account in bank or post office is allowed as deduction. Interest on savings account in bank or post office allowed as deduction, and the deduction is interest on savings account in bank or post office is allowed as deduction, and the deduction is interest or what beta? 10,000 whichever is lower. Next line. Right, next point. In case of a resident senior citizen, in case of a resident senior citizen, in case of resident senior citizen having, in case of resident senior citizen having interest on savings account, having interest on any savings account, having interest on any savings account or deposit account. Deposit account, comma, deduction is
deduction is allowed. Deduction is allowed under section. Deduction is allowed under section. कौन सा section बेटा? 80TTB. Deduction is allowed under section 80TTB. And the limit is what beta? Interest or 50,000, whichever is lower. And the limit is interest or 50,000, 50. Interest or 50,000, whichever is lower. Okay, beta? Everyone? Chalo. Now put the heading special concept in surcharge. Special concept in surcharge. In case of dividends, and capital gains, taxable under section 112. In case of dividends and capital gains taxable under section 112, 112A. and 111A. Correct, no? 112, 112 and 111A. The maximum rate of surcharge is maximum rate of surcharge. Check alo. Yeah. Maximum rate of surcharge is kitna beta? 15%. Maximum rate of surcharge is 15%. That is, i.e., that is 25%. That is 25% or 37%. 25% or 37% will not apply. 25% or 37% will not apply. Underline that, no, please. Please underline that. 25% or 37% will not apply. That's it. दोस्तों क्लियर है? चलो एग्जाम्पल 1, टेक दिस. Example 1.
Done, beta? Example 1, is it over? Can we proceed? Done. This example is not required. This was only for your knowledge. That when 25, 37 will come, only then 15 will come into picture. If 15 is applicable, पूरे पे 15 लगाएंगे. If 10 is applicable, सब पे 10 लगा देंगे. अरे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व करेगा पर ये ले लो पर ये डिविडेंड का थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये एक ले लो. Example 2. Take this. That's the end of story for surcharge. This working is clear, right? Friends, done? दोस्तों, अच्छा, before I proceed, I think I have an exam question. Let me give that to you.
So I'll tell one question, please write down. Write down. Mr. A, age 40 years. Mr. A, age 40 years and resident in India. Age 40 years and resident in India. He is having Mr. A, age 40 years and resident in India, is having total income of 6.5 crore. Comprising matlab included already, correct na? Comprising of LTCG under section 112, LTCG under section 112, 55 lakhs. 55 lakh, comma, STCG under section 111A, STCG under section 111A is 65 lakhs. पहले कितना बोला मैंने? ये 65. And other income is and other income is 5.3 crores. मैच हो गया ना? 6.5 बोला मैंने, 55 बोला, 65 बोला, मतलब 70 plus 50 120. Other income is 5.3. Clear ना friends? Speak out. Compute tax liability. Compute tax liability under default and normal and optional. That's what. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? चलो करो बेटा, सॉल्व करो. पहले कौन सा कर रहे हैं आप? डिफॉल्ट. यस, ऑलवेज डू डिफॉल्ट फर्स्ट.
This is what I gave, no? LTC is 55 lakh, 65 lakh, 5.3 crore. ठीक, solve करो. Come on, don't relax. Please do it. The basic tax in default is 1 crore 76 lakh 75,000. Everybody same answer? ये भी गलत करे मतलब कुछ तो है यार प्रॉब्लम. क्या कर रहे भाई? ये भी गड़बड़ कैसा कर सकते हैं आप? ये तो बेसिक हो गया अभी. क्या हो बेटा? हो गया गलत? सॉल्व हो गया? गुड. सम आर वेरी फास्ट. ठीक है. सरचार्ज एट व्हाट रेट बेटा? 25% on 1 crore 56 lakhs. And I'll also take surcharge at the rate of 15% on 20 lakh 75,000. समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन क्यों दिया मैंने? बोलो. We are becoming perfect in surcharge by these questions. Simple. The more questions we solve, the more perfect we become. ऐसे पढ़ा के छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है. Then it is called finishing the syllabus, not completing syllabus. दोनों में बहुत फर्क है. क्या कर रहे बेटा? हो गया? सेम करे. हाँ चलो फिगर तो बोलो. 25% कितना आ रहा है 1.56 लाख का? 3 लाख क्या है? 3 लाख. हाँ 39 lakhs. नेक्स्ट 3,11,000 टोटल.
2 crore 18 lakhs. Story is not yet over. We'll also add how much is that? Total. अरे 2 लाख क्या है 2 लाख? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मैंने ऑप्शनल में पूछा है, तो क्या आराम कर रहे क्या यार? $5.3 crores का स्लैब रेट कितना है टैक्स? $1 crore 57 lakhs. Total $1,77,87,500. Come on, my dear friends. Now tell me, we will add surcharge at the rate of 37% on 1,57,12,500. समझ में आ रहा है क्या बेटा? डिफॉल्ट में कितना आया? 25%. इधर कितना आया? 37%. Because default highest is 25, but in optional highest is 37 if it is more than 5 crores. ये क्वेश्चन क्यों दिया समझ में आ रहा ना? सरचार्ज में परफेक्ट होना है अपने को, इसलिए ये क्वेश्चन दिया मैंने. सिंपल लॉजिक, नथिंग मोर नथिंग लेस. द ओनली लॉजिक इज बिकम परफेक्ट. बस चलो कितना है फिगर? $58 lakhs. And we'll also add surcharge at the rate of on 20 lakhs 75,000. ये तो लास्ट कैलकुलेट करे थे अपन, कितना बोले आप? 3 lakhs. समझेगा बेटा? सी डिफॉल्ट में ऑप्शनल में एक तो टैक्स रेट चेंज हो गया, दूसरा सरचार्ज भी चेंज हो गया बिकॉज इट इज मोर देन 5 crores. यू लाइक द क्वेश्चन और नॉट? थैंक यू. कितना बेटा टोटल? $2,39,12,375. H is at the rate of 4%. 9,06,000. 9,56,000.
490 2 crore. And this is the end of story of surcharge. And this is the end of story for a tax rate for individual HUF, AOP, BOI, AJP. That's it from my side about tax rates for individual HUF, AOP, BOI, AJP. But there are still some people who are waiting. That is none other than companies, firms, corporate societies who are waiting for us to learn. Ready? इधर तक सबको क्लियर है क्या? Then the next game will start. That is most important, no? Friends, everybody, can I proceed? तो अभी तक किसका खत्म हो गया अभी तक अंडरस्टैंडिंग? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP. Clear? चलो. One last point I will tell in surcharge. Then we'll proceed in next interesting story. Sir, what is an AOP? What is a BOI? Right, listen. If an AOP is consisting of only companies, if AOP is consisting of what beta? Not just companies, only companies as its members. If an AOP is consisting of only what beta? Companies as its members. मतलब सिर्फ companies है उसमें, individual नहीं, HUF नहीं, कोई भी नहीं है, सिर्फ. In that case, what they told in the law is surcharge. If total income greater than 1 crore, 50 lakhs, does not exceed 1 crore. क्या रेट है बेटा? 10%. Same story. Total income more than 1 crore, 15%. That's it. 25%, 37% का कहानी नहीं है. Did you understand? This case is only when AOP is consisting of only companies as its members. Clear, no? Everyone, sir? All right, note. In case of an AOP, in case of an AOP consisting of only companies as its members, underline that word only. समझे क्या? सिर्फ कंपनीज है उसमें, consisting of only companies as its members, then rate of surcharge is as under. Then rate of surcharge is as under. लिखो नीचे, right below. Total income greater than 50 lakh, does not exceed 1 crore. Same thing. Total income greater than 50 lakhs, does not exceed 1 crore. कितना है बेटा? 10%. Next, total income greater than 1 crore. कितना है बेटा? 15%. That's it. Are we getting clarity, everybody? All of us? Dosto? So with that discussion, individual HUF, AOP, BOI, AJP done. So going back to the person definition, person defined by which section? Section 231. Person includes individual, HUF, firm. Hold on. Individual tax rate did we learn? Yes. Second, उसका taxes खत्म हो गया. बोलो ना बेटा.
डिफॉल्ट में तो डिफॉल्ट, ऑप्शनल में तो फर्स्ट कैटेगरी। ऑप्शनल में कोई एज का कॉन्सेप्ट तो है नहीं एचयूएफ का, बोलो ना बेटा। इंडिविजुअल एचयूएफ, उसके बाद एलएलपीज भी तो है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स रेट इन केस ऑफ फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। इन केस ऑफ फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी, माय डियर फ्रेंड्स, एनी गेसेस? क्या लगता है आपको? अप टू इंडिविजुअल में क्या था? डिफॉल्ट में अप टू 3 लाख नील, ऑप्शनल में 2.5 था, 3 लाख था, 5 लाख था। इधर क्या लगता है आपको, कितना देना चाहिए इनको? अप टू 5 lakhs. Good. The answer is straight away 30%. No slab rate, nothing. Even if it is 100 rupees, pay tax. 1 rupee, still pay tax. 1 रुपये तो टैक्स पे नहीं करते बिकॉज राउंड ऑफ में 0 हो जाता। सर क्लियर है क्या बेटा? सो व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फर्म्स? 30%। अगर 1 लाख की आया इनकम फिर भी 30,000 टैक्स पे करो। अगर इंडिविजुअल है तो 1 लाख है तो टैक्स पे करते क्या? क्यों? 2.5 लाख तक तो 0 है, विच इज कॉल्ड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अरे पढ़े ना यार एवरीवन। व्हाट इज द टैक्स रेट? 30%, स्ट्रेट 30%। क्या हो बेटा, बोलो क्या प्रॉब्लम है? 30% ठीक है ना? आपको कुछ तकलीफ हो रहा है क्या 30% से? नहीं ना? तो प्लीज गेट बैक। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड सरचार्ज, which says if total income greater than 1 crore, इंडिविजुअल में कब स्टार्ट हुआ था? 50 lakhs, बट यहां पे 1 crore है। मोर देन 1 crore does not exceed, वंडरफुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा का सीधा 12% है। If total income is more than 1 crore, surcharge rate is 12%. Some student is telling, oh 12, 30 plus 12, 42. Oh my God. अरे पागल हो गए क्या यार? 12% सरचार्ज किस पे लगेगा? तो फिर अरे करेक्ट नो फ्रेंड्स, रहते थोड़े लोग ऐसे 30 plus 12, 42, इतना बुरा हो रहा है उसके साथ यार, प्लीज। स्टूडेंट इज टेलिंग, बोलो सर और कुछ बोलो, और कुछ बोलो। कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, हो गया इतना ही है। इन फर्म एलएलपी लोकल तो दिस इज द ओनली स्टोरी। टैक्स रेट डायरेक्ट 30%। सरचार्ज अगर इनकम 1 करोड़ के ज्यादा है तो सरचार्ज आएगा, कितना आएगा? 12%, खत्म। वन टू स्टूडेंट्स रिएक्शन, यही अच्छा है इंडिविजुअल से। In India, there is 140 crore population of individuals, not partnership firms. Clear, no? So individual tax rate is very important. Everybody will not do business on partnership name. और आप ये भी समझो यहाँ पे लॉजिक कितना होगा। अगर इंडिविजुअल साल में 2 लाख कमा रहा है, उसको टैक्स कुछ नहीं है, बट इधर 2 लाख कमाए तो टैक्स भरना पड़ता ना। अब ये बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट सीधा है तो फर्म ही बनाएंगे हम। अरे यार जो टैक्स सेविंग है वो इंपॉर्टेंट ना आपके लिए। फ्रेंड्स, are we clear with this? Over, that's it. Chalo, let's start. Put the heading tax rate for firm, tax rate for firm or LLP or local authority. Tax rate for firm or LLP or local authority. इंडिविजुअल का इतना टाइम लगा इसलिए आपको लग रहा है अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, पता है ना? बराबर है ना? हाँ। टैक्स रेट फॉर फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, लिखो नीचे। टैक्स रेट इज व्हाट बेटा? 30%। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टोटल इनकम
टोटल इनकम मतलब बिफोर डिडक्शंस, आफ्टर डिडक्शंस. हाँ, बिफोर डिडक्शंस को क्या बोलते? ग्रॉस टोटल इनकम. कैसा आएगा? 5 हेड्स ऑफ इनकम में करो तो आएगा. क्या है वो 5 हेड्स ऑफ इनकम? सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस. याद है ना सब कुछ? क्लियर ना? One student is asking. Then one more time revise. No, 5 pillars of democracy. आएगा क्या 5 pillars of democracy एग्जाम में? प्लीज. चलो क्या लिखे आप? इफ टोटल इनकम क्या लिखे? इफ टोटल इनकम क्या लिखे? अच्छा उतना ही लिखे क्या? ओके. इफ टोटल इनकम लिखे क्या? अच्छा, if total income is more than 1 crore, then surcharge at 12%. Then surcharge at 12% will apply. That's it. That's the story of firm and LP local authority. चलो आ जाओ वापस. पर्सन डेफिनेशन में कौन कौन है? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, कंपनीज बाकी है अभी. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट. कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी बाकी है. नेक्स्ट. लोकल अथॉरिटी हो गया, AOP हो गया, BOI हो गया, AJP हो गया. तो मतलब क्या बच गया अभी? कंपनीज बच गया और कोऑपरेटिव सोसाइटी बच गया. ठीक है ना? क्या हुआ? लोकल अथॉरिटी मीन्स व्हाट? गुड. बोलो आंसर. बोलो. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पढ़े ना हम लोग क्लास में, बताए ना आपको मैंने. एग्जाम्पल पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, PMC. बात करें ना बेटा. गुड, वेरी गुड. डन. दोस्तों क्लियर है क्या? अब कौन बच गया? कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. चलो पहले क्या डिस्कस करेंगे? cooperative society. Let's talk about companies in the end. ठीक है. ये cooperative society का एग्जाम्पल क्या है बेटा? ना बोलो ना यार, कोई तो बोलो बेटा. मुझे बोलो ना. दोस्त को क्या बोलो? मुझे बोलो. हाँ, प्रेस्टेज पॉइंट प्रेमाइसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी. वहां पे बोर्ड लगा है सर, लिफ्ट में हमको आने नहीं दे रहे. वही है कोऑपरेटिव सोसाइटी. बराबर. अब आप मुझे बोलो, सोसाइटी, हु हैज फॉर्म द सोसाइटी? पीपल. ट्रिपल मैन. हु हैज फॉर्म सोसाइटी इज मेंबर्स. who is contributing money to society? Members. And society also makes some extra money by giving some places on rent. एक होर्डिंग लगाए उसका पैसा लेते, दीवार पे एक बोर्ड लगाए उसका पैसे लेते. अरे बराबर है नहीं यार? ये बिल्डिंग में कितना एडवर्टाइजमेंट है. इधर खड़े हो तो एक इंस्टीट्यूट का नाम दिखता है, इधर देखे तो एक इंस्टीट्यूट का नाम, नीचे देखे तो इंस्टीट्यूट का नाम, वॉशरूम जाते वक्त उधर एक नाम. बराबर है ना? नाम ही नाम है सब जगह पे. और लेट मी टेल यू, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टेकिंग मनी फॉर दैट. आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस. अगर सोसाइटी इज नॉट टेकिंग मनी, इट इज फ्री, देन बिल्डिंग में एक जगह पे भी आपको पेंट नहीं दिखेगा, वैसा पेंट कर देंगे सब लोग. समझे क्या? Everybody clear with that, my dear friends? Excellent. Now, what they told in the law is, generally society is not formed for the purpose of doing business. It is formed for the benefit of its members. But still they'll make some money in the course of the activity. जैसा इधर एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा रहे. बराबर है ना बेटा? इसलिए उनका लिमिट से बेटा अप टू 10,000, 10%. स्टूडेंट्स 10,000, 2.5 लाख, 3 लाख, क्या है ये? ऑब्वियसली इतना कम ही रहेगा, बिकॉज दीज गाइज डोंट मेक मच मनी. कॉर्पोरेट का इनकम ज्यादा होता है, इसलिए उनका लिमिट कम रखे. अगर इधर भी लिमिट 2.5 लाख रखे, कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी इंडिया में टैक्स पे नहीं करता फिर. बिकॉज कॉर्पोरेट सोसाइटी डोंट रन फॉर डूइंग बिजनेस, दे आर बीइंग ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स. समझ रहे क्या आप मेरी बात? अप टू 10,000, 10%. 10,000 to 20,000, 20%.
above 20,000 30%. सर लिमिट इतना कम रखे तो गवर्नमेंट को पैसा आता है सर. If the limit is big like 2.5 3 lakhs, they'll not make any money. Are we understanding? Apart from this, there is also something called surcharge. Students are loving surcharge. What they told in the law is, if total income is more than 1 crore, does not exceed 10 crores, then it is 7%. And if total income is more than 10 crores, then it is 12%. Now one student reaction. सर सबका ऐसा अलग अलग क्यों है सर? एक ही रेट है तो काम हो जाता ना सर? If that feeling is coming, you should recollect what I told you on day one. That is, if it is so simple, if it is so easy, why should a client come to a CA? And if it is so easy, हम CA बन के क्या करेंगे? Sir, please come out of that false impression. If somebody has told you in your intermediate or foundation, अगर by chance अगर आपको बोले तो, नहीं बोले तो अच्छी बात है. अगर आपको ये सुनने को मिले कि CA बन गए, साइन करते रहो पैसे आते रहेगा, साइन करते रहो पैसे आते रहेगा, that is utter nonsense and bullshit. ऐसा कुछ नहीं है कि CA बन तो साइन करेंगे पैसे आएंगे, साइन करेंगे पैसे आएंगे. भाई साइन करेगा मतलब you are to supposed to do an audit, you have to verify, you have to check, you have to apply your skill, knowledge, brilliance, time sense, common sense, and then do an audit. Then you will sign it. And if something goes wrong, you will put in jail. ऐसा कुछ नहीं है साइन कर तो पैसा आता है, साइन कर तो पैसा आता है, ये बात सही है. बट वो साइन करने के पीछे बैकग्राउंड में बहुत कहानी है. पर अपन क्या सोचते, सिर्फ ऐसा साइन करेंगे, ऐसा साइन करेंगे, पैसे आती ही नहीं, पैसा. ठीक है, good, we'll make money. See, I'm not denying the fact that we'll not make money. Once you qualify as a CA, definitely there are a lot of opportunities, huge scope for making money, that is there. But the whole point is all about ऐसा कुछ नहीं कि बैठेंगे साइन करेंगे पैसा आएगा, वैसा बिल्कुल नहीं है. That is all nonsense. मोमा है वो, मोए मोए क्या बोलते हो, वैसे कुछ आता है ना म्यूजिक. हाँ, ये सब मस्त याद रहता अपने को. ठीक है, anyways, are we clear with this point? So the more complicated it is, the more wonderful it is. Clear, no? And yesterday one student was asking me, sir, Companies Act में हमको पढ़ा है 15 महीने का कुछ कॉन्सेप्ट है, इनकम टैक्स में आपने क्यों नहीं बताया 15 महीने का कॉन्सेप्ट? That is only in Companies Act, not in income tax. In income tax, I solved one question where 29th March you started your business, by 31st March you have to close your books of accounts. In Companies Act, we follow something called 15 months. First year जब start करते 15 महीने चलता है, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर में. एंड दैट इज ओनली इन कंपनीज एक्ट, नॉट इन इनकम टैक्स. वो है, ये है, ये वो नहीं है. दैट्स इट. वो मतलब कंपनीज एक्ट, ये मतलब इनकम टैक्स एक्ट. क्लियर ना एवरीवन? आई हैव ए क्वेश्चन, सोच के बोलो ना. कंपनीज एक्ट विच ईयर? 2000. वंडरफुल. Income tax act which year? Do you think before 2013 Companies Act there was no Companies Act? था. कौन सा? मतलब आपको लगता है कि Companies Act इनकम टैक्स से पुराना है? Before Income Tax Act 1961, we had something called Income Tax Act 1922. Before that, we had Income Tax 1872. Income tax is not something which is invented by India. It was implemented by British and continued by India with one great name called tax. And that word tax is coming from a Latin word called taxu. Taxu करके एक वर्ड है, वो वर्ड से ये वर्ड बना है टैक्स करके. टैक्स ही नहीं. ठीक है, एनीवेज, जोक्स अपार्ट, समझ में आया क्या आपको? अरे एवरीवन बोलो ना यार. सर, in India, lot of things we don't invent. We directly discover. We do a copy paste activity. We love that control C, control V option. हम ज्यादा दिमाग नहीं चलाते. नया इन्वेंट क्यों करें? ब्रिटिश वाले अप्लाई करें टैक्स, चलो कंटिन्यू करो. सिंपल. वो लोग खेल रहे क्रिकेट, चलो हम भी बनाएंगे एक टीम. हम ज्यादा सोचते नहीं इंडिया में, डायरेक्ट. क्लियर ना बेटा? गुड. समझे क्या कॉर्पोरेट सोसाइटी? कैन वी राइट इट? थैंक यू सो मच. पुट द हेडिंग टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी. Tax rates for cooperative society.
In exam one time question has come, student wrote tax rate for corporate society. अरे स्पेलिंग का कुछ सेंस ही नहीं है. कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या होता है? कॉर्पोरेट सोसाइटी, कॉर्पोरेट इज डिफरेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिफरेंट. कोऑपरेटिव का स्पेलिंग क्या है? सीओ. ऑपरेटिव स्पेलिंग OPERATIVE. कोऑपरेटिव. डोंट राइट कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट सोसाइटी. डेंजर डेंजर आंसर लिखते हैं यार एग्जाम. चलो नीचे लिखो आंसर. कम ऑन. अप टू 10,000. अप टू 10,000 कितना बेटा? 10%. 10,000 to 20,000. 10,000 to 20,000, 20%. Above 20,000, what beta? 30%. चलो क्लियर है क्या फ्रेंड्स? राइट बिलो सरचार्ज. If total income is more than 1 crore, does not exceed 10 crores, 7%. And if total income is more than 10 crores, it is 12%. Come on, coming back to person definition. Person includes what? Individual, HUF, firm, LLP, local authority, corporate societies, companies, AOP, BOI, AJP. बराबर है ना? Did we learn the tax rates of every person now? Who is pending? That's it. Except company, सब कुछ हो गया अभी. Everybody clear, sir? If we learn the tax rates of companies, more or less, we are done with this chapter. Clear? Chalo. Let me start one great discussion called the tax rate of company. क्या हो बेटा? बोलो ना यार कुछ तो. Are we ready? अरे कुछ तो बोलो यार. Everyone please reply my dear friends. Come on. Tax rates for what my dear friends? Companies. Listen very clearly, listen very properly, because it is slightly crazy concept. Everything is crazy only. Chalo guys, companies. There are two types of companies. What are those? Public company. Wonderful. You know the difference between both of them, no? बोले बेटा. Company two types, public company and private company. But income tax told nonsense. हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. But we will bifurcate as Indian company and foreign company. अरे पब्लिक हो प्राइवेट हो तो टैक्स रेट सेम है मेरे भाई. सर इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने बोला था वो. क्लियर ना? डन. इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. व्हाट इज इंडियन कंपनी? which is incorporated in India as per Companies Act 2013 or under any other. ये लैंग्वेज पता है ना आपको? Excellent. Indian company. Tax rate क्या हो बेटा? 30%. However, if turnover, what beta? Sir, turnover is different, total income is different. टोटल इनकम मतलब सारे इनकम्स लेंगे डिडक्शन लेंगे तो टोटल इनकम आएगा. टर्नओवर मतलब क्या? सेल्स. करेक्ट नो? इफ टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22, we have to see previous year 21-22's turnover. Sir, I am sure we guys know that we are talking about assessment year 24-25. आपके एग्जाम के लिए यही एप्लीकेबल है.
बेटा आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 23-24 है, वापस बोल रहा हूं मैं, आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 23-24 है, असेसमेंट ईयर 24-25 है, इसमें कोई डाउट नहीं है. फॉर योर एग्जाम it is previous year 23-24, assessment year 24-25. Clear, my dear friends? So for assessment year 24-25, for assessment year 24-25, we have to check turnover of previous year 21-22. If turnover during previous year 21-22 does not exceed 400 crores. Does not exceed what, beta? 400 crores. Then the tax rate is 25%. I repeat once again, normally what is the tax rate? 30%. But if turnover during, bolo beta, if turnover during previous year 21-22 does not, remember that word 21-22 my dear friends, very very important. मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए हम कौन सा प्रीवियस ईयर टर्नओवर चेक करना है अपने को? 21-22 का. अगर 21-22 का टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर नहीं है, देन द टैक्स रेट इज 25%. आर वी गेटिंग क्लैरिटी? एवरी वन सर, कुछ डाउट आ रहा है क्या? कुछ तो डाउट आना चाहिए ना यार. कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है. कुछ डाउट? हाँ तो पूछो. प्रिय से 21-22 क्यों? किसी को भी डाउट नहीं आई है तो फिर पूछ क्यों नहीं रहे? फिर वेट कर रहे, कोई तो पूछो. और वन मोर रिएक्शन. चलने दो जो चल रहा है. वन मोर पर्सन. एक और रिएक्शन. उसके पीछे लॉजिक बोलो क्या? लिसन केयरफुली. देयर इज अ लॉजिक फॉर दैट. एक्चुअली देयर इज अ लॉजिक. व्हाट हैज हैपेंड इज, आई होप यू नो दैट बीजेपी गवर्नमेंट हैज कम इनटू पावर इन 2014. पता है ना आपको? 2014 for the first time BJP has come into power after a long gap. There was a long time where Congress was in power, and after a long gap suddenly BJP has done a lot of groundwork activity and they have come into picture. Correct? No, there was good things done by BJP on the ground level and some crazy things were done by Congress, because of which BJP came into power in 2014, and they continue to retain that in 19, and in 2024 most likely they'll retain. Now coming back to discussion, I'm not interested to tell you politics here, but what I'm interested to tell you is that 2014 when they came to power, at that time my dear friends, in case of companies, the tax rate was actually 30% only. The tax rate was actually 30% only. Getting what I'm saying, everybody? Now what has happened is, in 2017 my dear friends, in 2017, I hope you know that at that time the finance minister was Mr. Arun Jaitley. Clear है ना बेटा? 2014 के टाइम पे पूरा अरुण जेटली था वो टाइम पे. He was the first finance minister of BJP. Now what has happened here is, for assessment year 17-18 पहली बार चेंज लेके आए वो लोग. पहली बार they brought one change telling that कंपनी का नॉर्मली टैक्स रेट कितना है, बट उन्होंने बोला 25% टैक्स रेट लगाएंगे अगर प्रीवियस ईयर 14-15 का टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे. तब 150 करोड़ बोले थे, बाद में उसको 400 करोड़ बना दिए. प्रीवियस ईयर कौन सा लिए बेस? 14-15. फॉर 17-18 they took base as 14-15. They took 14-15 base because that is the first time when BJP has come into power. अमेंडमेंट कब करे ये लोग? असेसमेंट 17-18 अमेंडमेंट करे थे. असेसमेंट ईयर 17-18 अमेंडमेंट किए, बट उसके लिए बेस कौन सा ईयर लिए? 14-15, क्योंकि वो लोग तब भी पावर में आए थे. वो लोग प्रीवियस ईयर 16-17 को बेस में नहीं लिए. सर असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए, असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए नॉर्मली बेस कौन सा लेना चाहिए था? प्रीवियस ईयर 16-17 लेना चाहिए था, बट उन्होंने 16-17 बेस नहीं लिया, उन्होंने 14-15 को बेस लिया, क्योंकि तभी वो लोग पावर में आए थे. एंड दिस ट्रेंड कंटिन्यूड. नाउ सी, फॉर 18-19 द बेस बिकेम प्रीवियस ईयर 15-16. For 19-20 the base became previous year 16-17. For 20-21
the base became previous year 17-18. And for 21-22, the base became previous year 18-19. And for 22-23, the base became previous year 19-20. And for 23-24, the base became previous year 20-21. And for 24-25, which is important for us, the base has become previous year 21-22. I hope you understood the background behind this. इतना स्टोरी बोलने का मेरे पास दो रीजन है. एक तो आपको समझ में आना चाहिए प्रीवियस 25-22 क्यों आया. दूसरा, अपने को याद भी हो जाएगा अगर लॉजिक पता है तो. बराबर है ना यार? सिंपल. आर वी क्लियर? चलो बोलो अभी कंपनी का टैक्स रेट क्या है? 30%. बट if turnover in exam, if you write total income, completely gone. It is not total income, it is turnover. If turnover during previous year 21-22 does not exceed 400 crores, then the tax rate is 25%. That's it. Getting clarity, everybody? All of us. Foreign company. We love foreign companies because we want them to come to India and do business. Correct, no friends? But at the same time, we also take more money from them. Correct? The more foreign companies come to India, the more happy we are. The more imports of foreign companies, we are happy. Not foreign products. फॉरेन प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, बट फॉरेन कंपनी इंडिया को आ रहा है तो इंडिया में पैसे बढ़ रहा है. वी डोंट लव फॉरेन प्रोडक्ट्स बट वी लव फॉरेन कंपनीज. दोनों में फर्क समझ में आया ना सर? इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, द मोर एक्सपोर्ट्स इज वंडरफुल, द लेस इंपोर्ट्स इज वंडरफुल. ठीक है, जान दो, हो गया फाउंडेशन. ये बैक. फॉरेन कंपनी, व्हाट कंपनी? Foreign company. Foreign company, the tax rate is 40%. My God. Tax rate कितना बेटा? 40%. Apart from this, surcharge. Indian company, foreign company. If total income is more than 1 crore, does not exceed 10 crores, it is 7%. Total income is more than 10 crores, 12%. If you observe carefully, same thing I made you write in cooperative society. Indian company का surcharge rate, cooperative society का surcharge rate, दोनों same है. एक तो सेम निकला. सर क्लियर है क्या एवरीवन? चलो, फॉरेन कंपनी का सरचार्ज क्या लगता है आपको? 15%, 30%? मार दो उसको. इतना सरचार्ज बोलेंगे तो कौन आएगा यार इंडिया में? फिर 2%. अरे ऑलरेडी 40% टैक्स है ना यार. अरे 30 की जगह ऑलरेडी आप 40 ले रहे, फिर सरचार्ज भी ज्यादा बोलेंगे, सब कुछ ज्यादा बोलेंगे. उसको बोलेंगे भाई तू इंडिया में आ, 1 रुपए कमा, हमको 2 रुपए टैक्स पे कर. क्यों आएगा यार वो इंडिया में? फिर क्या कुछ तो बोला डायलॉग, अभी एक्ट कर रहे हैं जैसा कुछ नहीं बोला है. ठीक है. सो व्हाट इज द सरचार्ज रेट फॉर फॉरेन कंपनी? 2%. देन 5%. इतना फील क्यों हो रहा है यार? सरचार्ज इतना कम क्यों है सब फॉरेन कंपनी को? अरे टैक्स तो 40% है ना यार. Friends, please reply. Everybody getting clarity on this point, all of us. इसका previous year 21-22 का logic क्यों है समझ में आया ना आपको? That is what is the base which was set and it is being continued. Correct ना? कितना turnover? 21-22 does not exceed 400 crores. वो income नहीं है मेरे भाई, turnover है. So are we clear? Everybody saw. I'll give a small example. Reliance Industries Limited, they are paying tax at the rate of 30%. समझ रहे क्या? Expert Professional Academy Private Limited, we are paying tax at the rate of 25%.
Our turnover is not 400 crores. ₹400 नहीं है वो, 400 करोड़ है. वो एक साल का टर्नओवर है. ठीक है. So are we clear with this or not, everybody? All of us. चलो, अब मेरा एक क्वेश्चन है, सोच के बोलना. ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं. PQR and Co turnover during previous year 21-22 is 390 crores. कितना बेटा? What is the tax rate for assessment year 24-25? बोलो बेटा. Come on. 25%. Wonderful. That is most atrocious bullshit nonsense answer which students are giving. The answer is 30%. PQR and Co मतलब कंपनी नहीं होता, वो पार्टनरशिप फर्म है. Company will have limited or private limited. Now some friends' reactions. अरे PQR and Co कंपनी होता क्या यार? One more short reaction. सर मेरे को अभी तक नहीं समझा सर. PQR and Co मतलब कंपनी है ना सर. PQR and कंपनी है ना वो, तो कंपनी मतलब 25% आता है ना सर. अरे मेरे भाई, कंपनी मतलब will definitely have limited or private limited. PQR and Co is not a company, it's a partnership firm. अरे ये पता है क्या आपको? कंपनी को लिमिटेड प्राइवेट होता है, पता है ना? तो कैसा बोले फिर 25%? हाँ, कैसा बोले आप लोग फिर 25%? इतना कॉन्फिडेंटली, वो भी इतना कॉन्फिडेंटली. 1-2 स्टूडेंट्स रिएक्शन. अरे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार ये? अभी तो बोलेंगे ना 25%. प्लीज रिप्लाई यार. एंड 4-5 स्टूडेंट्स रिएक्शन. हमको कोई लेना देना नहीं है. 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक आप जो भी पढ़ाएंगे हम सिर्फ देखते हैं आपको, क्योंकि हमारा पेट हमारी बात नहीं सुनता है. आप जो भी बोलेंगे हम हाँ बोलेंगे. आप बोलेंगे क्या जवाब दे रहे हैं? हाँ. पागल हो गया क्या? हाँ. समझ में आ रहा है क्या? हाँ. क्या बोले अभी? हाँ. ब्रेक दो क्या? हाँ. हाँ. क्या तेरे क्वेश्चन समझ में आए क्या? हाँ. आर वी क्लियर? ठीक है, चलो गाइस. इज PQR and Co a company, my dear friends? No. Sir, I'm not joking, but let me honestly tell you, this question came in exam. This question such में it came in exam. For 2 marks they asked tax liability and student has done 25% tax rate, which is nonsense. How can you afford to do that? Company के पीछे limited या private तो होगा ना यार. If there is no limited private, it's not a company at all. If it's not a company, how does turnover make a difference? Partnership में तो tax rate सीधा 30% है. ये टर्नओवर वाला कहानी वो सब किसको रिलेवेंट है? कंपनी को रिलेवेंट है. दैट्स इट. आई थिंक वी आर क्लियर. चलो लेट्स स्टार्ट. टैक्स रेट फॉर कंपनीज. टैक्स रेट फॉर कंपनी. टेक द टेबल. कम ऑन.
हो गया? सच भी लिख दिया क्या? एक छोटे स्पेशल पॉइंट है, दैट आई विल टेल यू एंड देन विल टेक अ ब्रेक. ठीक है सर? दैट इज, सर, इंडियन कंपनी, व्हाट इज द टैक्स रेट? कम ऑन friends, come on, please reply, please. 30%. But if turnover during previous year 21 22 does not exceed 400 crores, then the tax rate is, बात तक सबको क्लियर है? फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या है बेटा? एग्जैक्टली. सो गेटिंग क्लैरिटी. One last point is that, sir, once upon a time, we were very much dependent on foreign companies to get some technology to India. Nowadays, especially since last 10-20 years, from 2000 onwards, last 20-25 years, Indian technology has drastically improved a lot. Even now, we are borrowing a lot of technology from China and Japan. But in spite of that, before it was very horrible. Made in India was very, very, very less. But nowadays, we are focusing too much towards Make in India and Made in India. We are also having that consciousness where we want to promote an Indian product. That is there with this today's generation, that we love Indian products and we are focused towards it. Sometimes when we don't have an option, we are doing it. Because for example, iPhones we buy or some phone we buy, it's coming from China or some other place. अपने पास कुछ option नहीं है. अच्छा, अगर कुछ big brand in India comes up and tell we'll manufacture in India, these phones are being manufactured in India, sold in India, we would love to do that because we have that consciousness. ये सब story बोलने का reason क्या है? We were very much dependent on foreign company to take their technology or to take their technical services. And if we take in their technology, we have to pay them something. What is it we are supposed to pay is royalty. Correct, my dear friends? Or sometimes we used to take their services, for which we used to pay something called fees for technical services. Clear, my dear friends? And this was approved by government of India. And in those cases, they told tax rate is not 40%, the tax rate is 50%. Clear, friends? Everyone, write one point. Put one note. Write as a note. In case of royalties, in case of what beta? Royalties and fees for technical services, in case of royalties and fees for technical services received by foreign company, in case of royalties and fees for technical services received by foreign company, from government or an Indian concern, government of India or an Indian concern, Indian entity beta, Indian entity or an Indian concern, where agreement is approved by central government. Agreement is approved by central government. Agreement is approved by central government. Then the tax rate is 50%. ठीक है? नीचे लिखो बेटा. In case of royalties, in case of what beta? Royalties, agreement is entered between 1/4/1961 and 31st March 1976. Between that period agreement is entered. ये पीरियड में agreement enter हुआ तो ही 50% टैक्स रेट है, क्योंकि वो टाइम पे अपने को जरूरत था, इसलिए हमने किया. नेक्स्ट, in case of fees for technical services, agreement is entered between
agreement is entered between 1st March 1964 and 31st March 1976. 1st March 1964 and 31st March 1976. Between that period, agreement is entered. Let me tell you frankly that in last 10 years, क्या बेटा? Fees for technical services. Let me tell you honestly that in last 10 years, never a question has come in the exam on this particular point. The reason because in CA final level, there is lot of discussion on this concept of royalties and technical services. That's why generally these questions are coming in CA final, not at CA inter level. But since it is there in your syllabus, I taught you. Syllabus में है करके मैंने आपको पढ़ाया. But the probability of coming in exam is very, very less. ठीक है ना? Everybody? All of us? Done. That's the story of tax rates in case of individual, HUF, AOP, BOI, AJP, companies, firms, LLP, local authority, cooperative societies. Are we fully clear till now, everybody? Done. We'll take a short break. After break, we'll talk more. Thank you.
आप लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए क्या? व्हाट्सएप ग्रुप सब लोग ज्वाइन किए क्या? नहीं, आपको लिंक नहीं भेजे क्या व्हाट्सएप पे? टैक्स का भी है क्या? टैक्स का ही है क्या वो? ये टैक्स का ही है श्योर? मुझे नहीं पता, तो स्कैनर है वहां पे और कुछ नहीं। ठीक है, जो भी है व्हाट्सएप को सब लोग ज्वाइन कर लो यार, कभी भी कुछ अपडेट देना है तो उसमें दूंगा। ठीक है, चलो। क्या हो बेटा, गर्मी लग रहा है क्या? एसी चाहिए? पिल्लो, बेडशीट? Yes, get back, my dear friends. Come on. So, friends, we have discussed the tax rates for various categories of persons, and we have also discussed the rates of surcharge. I hope we are clear till this point, everybody. Chalo, just 1-2 points I'll tell now, then we can solve some interesting questions. Are we ready? Everyone. So, what is section 112? Long-term capital gains. Tax at what rate? What is section 112A? Long-term capital gains on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange. Will tax at the rate of, on which STT is paid, will tax at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. Same case, not long-term but short-term, 111A. Good. 15%. Very good, very good. What is section 115BB, beta? Casual income, betting, gambling, lottery, tax at the rate of 30%. बराबर है ना? What is section 115BBJ? Online games. Now, my dear friends, listen very clearly. Concentrate. Sir, heard of something called income tax raid? What is income tax raid? इतना गुस्सा क्यों यार? दिया ना यार ब्रेक, हो गया ना ब्रेक, फिर भी इतना गुस्सा? चलो, क्या होता है इनकम टैक्स रेट? क्यों करते हैं इनकम टैक्स रेट और किसकी घर पे करते हैं? अच्छा, जिस केस में गवर्नमेंट को लगता है कि ये बंदा बहुत पैसे कमा रहा है और ये टैक्स एवेड कर रहा है. सर, नाउ आई हैव 3 इंटरेस्टिंग वर्ड्स. लिसन फर्स्ट, दिस इज मोर फॉर नॉलेज, प्लीज लिसन. Sir, there is some word called tax planning. There is a word called tax evasion. There is a word called tax avoidance. तीनों में कुछ फर्क है क्या? अच्छा, आप 3 वर्ड्स लिखे तो फर्क तो रहेगा ना सर. अच्छा, ठीक. टैक्स एवेजन मतलब क्या? टैक्स चोरी कर रहे हैं. टैक्स कैसे चोरी करते? हाँ, इलीगली पैसे कमा रहे बट फिर भी टैक्स पे नहीं कर रहा है. इज इट लीगल? इज इट लीगल? टैक्स मैंडेटरी है क्या बेटा? सरचार्ज मैंडेटरी है क्या? हाँ, वेरी गुड. HCC मैंडेटरी है क्या? वेरी गुड. व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? सम स्टूडेंट्स, टैक्स प्लानिंग मीन्स प्लानिंग द टैक्स. सर, व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? ये क्या है भाई? मतलब कम दिखाना. What is tax planning, boss? Tax planning is something like taking the benefits of deductions and exemptions within the parameters of law. जैसे फॉर एग्जाम्पल कल पढ़े थे हम लोग, PPF में पैसे लगाए तो 80C का डिडक्शन आएगा, 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा. They are all something like deductions, exemptions, what we get, that is called tax planning. हो गया? इतना इंटरेस्टिंग है. कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, डोर ओपन होते हैं. जब तक बैठेंगे ना तब तक देखते रहेंगे. सीट मिल गया क्या, मैं उठूं क्या? क्या यार, my God. Sir, what is tax planning? Come on. Planning the tax. Wow. Taking the benefits of exemptions and deductions within the parameters of law. Yes or no, sir? What is tax avoidance? Avoiding the tax.
फर्क क्या है बोलो? अवॉइडेंस क्या होता है, क्या लगता है आपको? अवॉइडेंस इज नॉट पेइंग द टैक्स, एवेशन भी नॉट पेइंग द टैक्स है ना, दोनों में फर्क क्या है फिर? नॉट शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, इनकम टैक्स को शिफ्ट कर देंगे आप, वो इनडायरेक्ट में है, मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं आपको. She thought of telling something, but after half the way she understood. कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जान दे रहे भाई, मैं कुछ बोलता ही नहीं. She thought of telling avoidance of tax means avoiding the income only to avoid tax. बोलो बेटा क्या लग रहा है आपको टैक्स अवॉइडेंस? बोलो क्या? वो भी नहीं बोलते. अरे अब तो ब्रेक हो गया ना यार, ब्रेक के बाद भी ऐसा क्या? सम स्टूडेंट्स अब भी हुआ ना ब्रेक, रुको एक 5-10 मिनट थोड़ा सब सेटल होने दो, उसके बाद बात करेंगे. क्या यार, गेट बैक गाइस, कम ऑन. सर टैक्स एवेशन इज इलीगल. टैक्स एवेशन इज इलीगल. मेकिंग मनी बट स्टिल नॉट पेइंग टैक्स, दैट इज इलीगल. टैक्स अवॉइडेंस इज टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ loopholes in law. Taking the benefits of what? Loopholes in law, which is not illegal, that is legal. Correct, no friends? This is tax planning is not making use of loopholes. It is making use of deductions and exemptions. But when it comes to evasion, it is what? Illegal. अरे yes or no friends? आपको एग्जाम्पल दूंगा यार, कुछ तो एग्जाम्पल देंगे. हाँ, I'll give an interesting example. Listen very clearly. So let us say for example, one person is going on a bike. He is going on a bike. He is at the signal. He is at the junction. Imagine, he is at the signal. He is at the junction. He has to go to the opposite road. But the problem is, opposite road is one way. That means he directly cannot go. That vehicles can come through that route, but he can't go through this route. पुणे में तो बहुत से वन वे, वहां पे बोर्ड लिखा है, डू नॉट ड्राइव व्हीकल्स दिस वे, वन वे. क्या बोर्ड है बेटा? डू नॉट ड्राइव व्हीकल्स दिस वे, वन वे. दैट इज अ बोर्ड विच इज पुट अप एंड पुलिस इज ऑल्सो स्टैंडिंग देयर. वरना आप बोलेंगे ऐसा बहुत लिखते हैं, बहुत देखे ऐसा. ठीक है, वो तो ठीक है, बट वहां पे पुलिस है. ठीक है ना, आप गए तो पकड़ेंगे उसको, पकड़ेंगे आपको. फिर आप 2 मिनट सोचे क्या करो यार, अभी पूरा घूम के जाएंगे तो 4-5 किलोमीटर होगा, 2-3 किलोमीटर होगा, कुछ तो करना पड़ेगा. What he has done is, he has got down from the bike, he has switched off the bike and started pushing. समझ में आ रहा है क्या? And the police stopped and asked, what is this nonsense? This is one way. He is telling, police, भैया वहां पे क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है वहां पे. Do not drive vehicles this way. I am not driving, I am pushing. समझ में आ रहा है क्या? It is something like a making use of loopholes in the law. That is something like tax avoidance. एग्जाम्पल अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो लाइट ले लो. ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो बेटा. मैं ये सब क्यों बोला अभी? टैक्स प्लानिंग अवॉइड इलीगल, कुछ तो था. हाँ, इनकम टैक्स रेड पूछ रहा था मैं आपको. बोलो, इनकम टैक्स रेड. जिस गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसके पास बहुत पैसा है, ये टैक्स नहीं पे कर रहा है, उसके पास इनकम टैक्स रेड करेंगे. देखे क्या आप लोग कभी? किसके घर पे देखे? अच्छा, पिक्चर में देखे. तब बोले हाँ, लॉट ऑफ मूवीज वी हैव सीन वेयर दे कम एंड डू इनकम टैक्स रेड. दे चेक एवरीवेयर. बराबर है ना? नहीं, इधर कुछ नहीं मिलता, डोंट वरी. So, समझ में आ रहा है ना बेटा? That's how they do income tax raid, and the officer comes and checks everywhere if he can find something. And suddenly कहीं एक बार प्रेस करते पूरा ऐसा cash, gold, documents, everything will come out. अरे so many movies they have shown all this, no sir. आपको क्या लगता है वो सब मिलने के बाद क्या होगा? अरे गवर्नमेंट लेके चले जाते. पिक्चर में तो उतना ही दिखाए सर. आपको क्या लगता है सर उसके बाद क्या होगा? अरे जेल वगैरह तो ठीक है यार, पैसे की बात कर रहे हैं अभी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफिसर विल आस्क हिम, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस? एक्सप्लेन द सोर्स. क्या था? अदर सोर्सेस. अरे अदर सोर्सेस मतलब कहां से आए यार वो पैसे? फॉर एग्जाम्पल
what is the source of it means how did you get that. For example, if some gold is found, they will ask what is the source of money for purchasing this gold. He will tell मुझे पैसे याद नहीं आ रहा पर कैसे तो आया. Correct, my dear friends? Then it is called as unexplained. Correct, my dear friend? What do you call it? In case of unexplained money or in case of unexplained investments, in case of unexplained expenditure, in case of unexplained cash credit. You're getting what I'm saying? In all these cases, my dear friends, tax is at the rate of 60%. What rate is the tax? Plus at the rate of 25%. Plus HEC at the rate of 4%. प्लस प्लस कुछ भी नहीं, बस बहुत हो गया. Total, student is telling, total is 89%. Effective rate is 78%, my dear friends. ठीक है, ऐसा है. Effective rate is what, my dear friends? 78%. समझा 78 कैसा है? बोलो, कोई तो बोलो 78 कैसा है? 60 plus 25 plus 4 89. ये 78 कहाँ से आया सर को? 12 कम कैसा करे? 11 कम कुछ आया, कुछ तो करना पड़ेगा. बोलो 78 कैसा है? 60 plus 25 plus 4 78. करेक्ट ओनली. अरे क्या है यार, कुछ तो कॉमन सेंस करो, पढ़ा नहीं यार. 25% on 60 is 15. 60 plus 15 is 75. On 75 4% is 3%. Effectively it is 78%. का 25% 15 ही होता है. 60 plus 25 नहीं करना है अपने को. Surcharge is not on income. Surcharge is on. So please don't do that mistakes. Oh. So are we clear with this, everybody? All of us. So if we don't explain the income, we don't explain the expenditure, then gone. They'll charge tax at the rate of 60%. And this concept is given by section 115 BBE. Which section, my dear friends? 115 BBE. Chalo, put the heading. Section 115 BBE. Section 115 BBE. Right below. In the following cases, in the following cases, comma, tax rate is in the following cases, comma, tax rate is 60%, 60% plus surcharge, plus surcharge 25%, plus HEC plus HEC 4%. Bracket, effective rate is what beta? 78%. समझा क्या बेटा एवरीवन? चलो फर्स्ट पॉइंट, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट. अनएक्सप्लेन्ड व्हाट बेटा? कैश क्रेडिट. बैंक में पैसा आया किसी से 10 लाख रुपए, कहां से आया मतलब बोल नहीं पा रहे आप.
Unexplained cash credit. Number 2, unexplained investments. Number 2, unexplained investments. Number 3, unexplained money. Number 4, investments. Investments not fully disclosed. Investments not fully disclosed. Investments not fully disclosed. So getting my point, everybody? Next point. Unexplained expenditure. Unexplained, what बेटा? Expenditure. मतलब P&L में कुछ एक्सपेंस दिखा है, क्या किया मतलब बोल नहीं पा रहे. फॉर एग्जाम्पल P&L देयर इज समथिंग कॉल्ड टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस. क्या करे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस? प्रूफ दिखाओ. बोल रहे किए कुछ, क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन गेटिंग पॉइंट एवरीबॉडी? यू माइट आस्क सर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दो ना सर. आई विल गिव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. देयर वाज वन सिचुएशन वेयर वन क्लाइंट इज हैविंग वन बाइक. ओनली वन बाइक इज देयर. In the balance sheet asset side, there is no car, there is only one bike. But in P&L account, there is 2 petrol expense, 2 diesel expense. बाइक में दोनों पेट्रोल दोनों डाल रहे क्या? इंडिया में डीजल बाइक है क्या? सिर्फ पेट्रोल ही बाइक होता है ना सर. तो डीजल किसके लिए खर्च करे फिर? क्या बेटा? दोस्त की गाड़ी. तो दोस्त की गाड़ी रेंट पे लिया तो फिर रेंट एक्सपेंस किधर है? दोस्त की गाड़ी लेकर किधर गए? क्या काम करे? अरे यार ये सब बोलने के लिए आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, ऑफिसर बोलेंगे तो वो नहीं सुनता है. ही विल आस्क एवरी क्वेश्चन, ही विल आस्क एवरी काउंटर, ही विल आस्क प्रूफ फॉर एवरीथिंग. दोस्त की गाड़ी है ठीक है, किसके लिए यूज करे फिर? आप बोले गोवा गए, क्या करने गए? घूमने गए. पर्सनल एक्सपेंस है वो फिर. बट पर्सनल एक्सपेंस व्हाई इट इज कमिंग इन P&L अकाउंट? इन P&L अकाउंट व्हाट एक्सपेंस शुड कम? ओनली बिजनेस एक्सपेंस. पर्सनल एक्सपेंस कैसे आ सकता है P&L में? मीटिंग. क्या मीटिंग? क्लाइंट मीटिंग इन गोवा. वंडरफुल. फॉरेन क्लाइंट्स. एक्सीलेंट. रुक जाओ अभी वहीं पे. ठीक है, डन. क्लियर एवरीवन? चलो वन लास्ट पॉइंट इन दिस. क्या क्या लिखा अभी बोलो? अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, unexplained money, investment not fully recorded, unexplained expenditure. बराबर है ना? लास्ट पॉइंट फर्स्ट राइट, पहले लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. अमाउंट बोरोड और रीपेड. अरे एक ही पॉइंट है, लिख दो वहां पे नीचे. लास्ट पॉइंट दिस इज अमाउंट बोरोड और रीपेड. कितने पॉइंट लिखे अभी? ये 6th पॉइंट है ना? हाँ ठीक है. अमाउंट बोरोड और रीपेड, अमाउंट borrowed और repaid on हुंडी. लिखो पहले, मैंने बोला ना लिखो पहले. अमाउंट borrowed और repaid on हुंडी. हुंडी HUNDI. अमाउंट borrowed और repaid on हुंडी otherwise than through. पहले लिखो अमाउंट borrowed और repaid on हुंडी otherwise than through, otherwise than through account pay check. Otherwise than through account pay check. I'll explain, don't worry. Amount borrowed or repaid on hundi otherwise than through account pay check. Chalo my dear friends, first of all, come on, listen everybody. I'll explain that. Sir, we know something called check. What is the check? Check is nothing but a negotiable instrument. We will sign the check and hand it over to the other person. Money will go. Correct, my dear friends? We have 3 types of check. I'll tell you what is that. Number 1 is called bearer check. Other one is called cross check. The third one is called account pay check. And in income tax, everywhere you see, you will not find the word cross check. You will find only the word what beta? Account pay check. मैंने 3 नाम क्या बोला था बेटा? bearer check, क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक. किसी को आइडिया है क्या तीनों में फर्क?
कोई बोलेंगे क्या? Who is that? Yes, कौन बोले? किसी को भी आइडिया नहीं है तीनों में फर्क? शुभम बोलना। नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है। उसके अकाउंट में ही पैसा जाएगा, वो क्रॉस चेक है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो मेरे अकाउंट पे ही क्या है वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो नॉर्मली ये इसका डिफरेंस तो पता है ना, क्रॉस चेक मतलब वी जस्ट ड्रॉ टू लाइंस, अकाउंट में मतलब वी ड्रॉ टू लाइंस बिटवीन विल राइट अकाउंट पे ही, ये तो पता है ना बेसिक डिफरेंस। बेयर चेक क्या होता है बेटा? सिंपल लॉजिक। लेट्स से आवर फ्रेंड शुभम इज देयर, आई हैड टू पे हिम 1 lakh rupees, I wrote a check of 1 lakh and I did not draw the 2 lines, I did not cross it, I did not write account pay, and I gave it to him. It is called bearer check. He can go to the bank and withdraw the cash. He can go to the bank and withdraw the cash. Account pay check means I have drawn 2 lines and I wrote account pay and I gave the check to him. Then he cannot withdraw cash with the check. Money will directly go from my bank account to his bank account only. समझेगा बेटा? But बीच में एक specific point है, that is called cross check. What happens in cross check is that I have drawn 2 lines, I wrote a check of 1 lakh to Shubham and gave it to him. इधर भी ये कैश विड्रॉ नहीं कर सकता है, बट फर्क क्या है सुनो, carefully listen. So let us say Shubham had to pay his friend 1 lakh. मुझे शुभम को कितना देना था? 1 lakh. शुभम को उसके दोस्त को कितना देना था? 1 lakh. And what Shubham has done is he has turned the check backside and wrote there endorsed to so and so person. Now money will go from my bank account to Shubham's friend's bank account. That is called endorse. सुने क्या आप लोग वर्ड? That is called endorse. What can be endorsed is only a cross check, but we can't endorse an account pay check. If I give an account pay check to Shubham, he cannot transfer the check to any other person. If I give an account pay check to Shubham, money will directly go from my bank account to Shubham bank account. That check cannot be transferred to another person. That is why it is called account pay check. And income tax, everywhere you will find the word account pay check. फर्क समझ में आया ना? In different chapters, this word will come. And again, I will not teach that time. That's why this much detail I told you. I think you are clear. Everybody, sir? You might ask one doubt. सर इनकम टैक्स में अकाउंट पे चेक की क्यों बोले? लॉजिक सिंपल है, क्रॉस चेक है तो किसके अकाउंट में जा रहा कैसे ट्रैक करेंगे यार? बेयर चेक है तो जाके कैश उठाएगा जो भी जाके। आपका करेंसी नोट आप देखेंगे तो उस पर नीचे लिखा हुआ रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ए सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, दैट इज बेयरर. बेयरर मींस हु इज होल्डिंग इट. जिसके पास वो नोट है उसका ही पैसा है वो. नोट पे थोड़ी अपना नाम लिखा है यार. सिंपल लॉजिक है ना यार. ऑन अ करेंसी नोट आवर नेम इज नॉट मेंशन्ड. इट्स अ सिस्टम in which we are living today. I mean not today, I mean to say we are living in the world like this where currency is being circulated in order to run the economy. It's all currency. Getting my point, everybody? All of us. Next, coming back. What is the line we wrote? Amount borrowed. Borrowed matlab? Loan is taken. Or what? Loan is given back. On what? Hundi. Hundi is not your temple hundi. टेम्पल में जो हुंडी होता है ना वो हुंडी नहीं है. टेम्पल हुंडी में जाके थोड़ी ना बोरो करके रीपे करेंगे. ऐसा थोड़ी, ऐसा बोरो करके भगवान जी आशीर्वाद फिर बोलेंगे हो गया काम रीपे. ऐसा नहीं होता ना. दैट हुंडी मीन्स ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ए बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन इन ए लोकल लैंग्वेज. ए बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन इन ए लोकल लैंग्वेज. दैट इज called what, sir? Hundi. Correct, no? For example, Shubham has come to me and told, Shiva sir, मुझे लोन चाहिए एक 2 lakh rupees. I told, okay, take the loan. But you have to write one promissory note and then I give a loan. And the promissory note we wrote in local language. Then that promissory note wrote in local language is called Hundi. Correct, no? Who has taken the loan? Shubham. He should take that loan from me only by way of account pay check. If he takes from me by cash, it's a mistake and violation of law.
On that amount what he has taken, he has to pay the tax at 60%. Law is telling, if you take a loans, please don't take through cash. We want to take only by account pay check. Because government logic is simple. They want to cut everywhere cash is there. They want to cut as much as possible. Because the more cash visibility, the more we feel like not paying tax. लॉजिक सिंपल है ना यार. अगर पैसा कैश में आ रहा है तो टैक्स पे करने का किसको मन करता है यार? सिंपल सी बात है. Correct? No, see, for example, if I'm, let us say, for example, in a whole year, I'm earning 40 lakhs. Just an example. In that, let us say, 30 lakhs is coming by cash. मैं 10 लाख पे टैक्स भरूंगा, 30 लाख पे थोड़ी टैक्स भरूंगा मैं. अगर कैश में आ रहा तो जेब में रख लूंगा मैं उसको. Friends, correct? No? That is the reason government logic is simple. They want to try to reduce the cash as much as possible. Friends, everyone, now read the line. What is the line? Amount borrowed or repaid on hundi, otherwise than through account paid check. Otherwise than through account paid check. मतलब account paid check में लिए तो चलेगा. If it is other than account paid check, that is not okay, and you have to pay tax. Getting clarity, everybody? Did we get that English language, everybody? And these all points are given with section 115 BBE. Are we fully clear? Everyone, sir? That's it. That's the story of this interesting concepts. Are we fully clear? Done. Chalo, get back. Questions? Which questions done? Please. Open page number 32, come on. Question number 1 and 2 is over. Question number 3. Can we solve? Let's see that. Mrs. X is a resident in India for assessment year 24-25. आपके एग्जाम के लिए यही एप्लीकेबल है दोस्तों. For previous year 23-24, her income chargeable to tax in India, how much beta? 15,54,810. Find out tax liability in old and new schemes. If the age of Mrs. X is 59, second option 60. Old and new matlab, I want default and optional. So getting my point, everybody? All of us, एक interesting point है बेटा. सुनो ना बेटा एक बार. Sir, when do you call a person as senior who has touched 60 and above at any time during previous year? बराबर है ना बेटा? Everyone, sir? So let us say, for example, previous year क्या है अपने एग्जाम के लिए? 23-24. Assessment year. Let us say 60th birthday. Which birthday beta? 60th birthday is on 10th February 24. 10th Feb 2024. Do you call him senior? बोलो बेटा. Do you call him senior for assessment year 24-25? For assessment year 24-25, is he a senior? Without any second thought, the answer is yes. Correct, no, my dear friends? Why yes? Because he has attained the age of 60 anytime during previous year. Now let us say his birthday is on 10th March 24. Speak out. Still he is a senior. Correct, no? What if his birthday is on 2nd April 24? Speak out. No. अरे अगले साल आ रहा है ना 60. बोलो ना बेटा. 1st April 24. Law told answer is yes.
What law told is that special point. सुन लो. Normally is senior कब बोलेंगे अपन? 60 years anytime during previous year. But if any person's birthday falls on 1st of April, हो सकता है ना किसी का बर्थडे 1st April. If any person birthday falls on 1st April, then he is deemed to be senior for previous year itself. समझे क्या? अरे 31st को आता तो सीनियर बनता था ना वो. एक दिन थोड़ा लेट आया बोल के उसको बोलेंगे क्या तो 1 साल रुक जा. समझे क्या लॉजिक? एवरीवन फ्रेंड्स, इसको लिख लेते अपन. कैसा लिख देते? अदर पॉइंट बोल के लिखो. एक हेडिंग लिखो. अदर पॉइंट्स लिखो उसमें. An individual is regarded as senior An individual is regarded as senior if he attains 60 years. If he attains 60 years at any time during previous year. 60 years at any time during previous year. Full stop. Further, comma, if the birthday falls on the birthday falls on 1st of April. 1st of April of assessment year. Getting my language, no? The birthday falls on 1st April of assessment year. Still, the birthday falls on 1st April of assessment year. Still, he is regarded as senior for previous year. समझे क्या बेटा? Still he is regarded as senior for previous year. समझे क्या लैंग्वेज सब लोग? बेटा प्लीज जवाब दो. सबको ये क्लियर है क्या? Done. Get back. Now what is the question they asked? Ex resident है, tax liability under default optional, 59 years 60 years. कर लेंगे आराम से. 59 मतलब नॉर्मल, 60 मतलब चलो. फर्स्ट क्या करेंगे बेटा? बेटा बोलो. क्वेश्चन नंबर सॉरी क्या हुआ? What happened, guys? Tell me what is the problem. Shall we start? Default. First of all, rates are same irrespective of age. In default, rates are same irrespective of what beta? Age. चलो इनकम कितना दिए? 15 लाख. चलो बेटा अप टू 3 lakh nil. 3 lakh to 6 lakh 5%, which comes to 15,000. 6 lakh to 9 lakh 10%, which comes to 30,000. 9 lakh to 12 lakh at the rate of 15%, 45,000. 12 lakh to 15 lakh 20%, which is 60,000. Above 15 lakhs 30%,
which is 16,443 total. 1,66,443. Will you add surcharge? Speak out. Q. So less than 50 lakhs. H is at 4%. कितना बेटा 4%? 6,000 665 6658. What's the final answer? 1,73,100. टैक्स लायबिलिटी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? राउंडेड ऑफ as per section 288B. I'm sure we are clear with this, everybody. This is a story of what? Default. दोस्तों डन. नेक्स्ट, ऑप्शनल में दोनों करना पड़ेगा ना बेटा. ऑप्शनल में फर्स्ट केस एज इज, सेकेंड केस एज इज 60. बराबर है ना बेटा? फ्रेंड्स, इफ एज इज 59, व्हाट इज द आंसर? अप टू 2,50,000 nil. बराबर है ना? 2.5 lakh to 5 lakh at the rate of 5%, which comes to 12,500. 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20%, which comes to 1 lakh. And about 10 lakh at 30%. How much is that? Tell me. कितना बेटा? 166 2 lakh how much is HSC? 11,000 total. $2,90,000. If the age is 60, what will happen beta bolo? To 3 lakhs nil. 3 lakh to 5 lakh 5%, which comes to 10,000. 5 lakh to 10 lakh 20%, which comes to 1 lakh. About 10 lakh 30%, which comes to 166,443. Same only, no? Total 2 lakh 76,000 443. To that I will add which is at the rate of 4%.
कितना है बेटा? 11,11058 टोटल. दैट्स इट. इससे उससे कंपेयर करते 2,600 रुपये कमाएगा. ऑब्वियसली 2,600 कमाएगा. अगर 2,500 का उधर बेनिफिट आ गया 4% सेस मुझे 100 रुपये, 2,600 कमाएगा उसका इसका. I think we are getting full clarity on this point, everybody. So are we comfortable with computing tax now? So many questions we solved, at least some 10-15 questions we solved till now. Minimum, bare minimum. So clear? Everyone? Get back. Done. Which question over? Third question done. Question number 4. So please see that. Compute the tax liability of कौन बेटा? Excluded मतलब what is it? कंपनी, प्राइवेट पब्लिक क्या कर रहे हैं अपने को? कंपनी whose total, assuming that total income of X Limited is 1 crore 1 lakh. When it is something like 1 crore 1 lakh 10 crore 1 lakh, marginal relief is possible, highly possible. बराबर है ना बेटा? एंड यहाँ पे क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखेंगे. Assume that turnover during previous year 21-22 is 500 crores. Assuming that turnover during previous year 21-22 is how much बेटा? 500 crores. तो बोलो अभी टैक्स रेट क्या आएगा? 30%. Because turnover during 21-22 does not exceed 400 crores, then it is 25%. If not, the tax rate is 30%. दोस्तों इसमें स्लैब रेट करने का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है अपने को. बराबर है ना? क्वेश्चन नंबर 4 ना? Sir, there is no concept of applying slab rate, no here. Friends, tell me, what is the income? One crore 1 lakh. Sir, hold on 1 second. Don't write. Just 1 minute. Listen now here. 1 crore 1 lakh. What rate will calculate tax? Straight away 30%, which comes to 30 lakhs 30,000. Correct? No, don't write. Just 2 minutes. Wait. 30 lakh 30,000. To that, I will add what? At what rate बेटा चेक करके बोलो. याद नहीं है तो याद है तो अच्छी बात है. Surcharge at the rate of 7%. More than 1 crore does not exceed 10 crore 7%. More than 10 crore 12%. कंपनीज का कॉर्पोरेट सोसाइटी का सेम है बेटा. क्लियर ना? कितना 7%? 2 lakhs 12,100. So total is coming to 32 lakhs 42,100. This is a story when the income is 1 crore 1 lakh. Sir, imagine, look at here. If income is 1 crore, what would have been the tax, sir? 30 lakhs. बराबर है ना बेटा? सरचार्ज इज nil. डोंट टेल 50 lakhs के ऊपर तो आएगा ना. अरे वो इंडिविजुअल का है, ये कंपनी है. Speak out. Company is different, partnership firm is different. Company is different, individuals are different. Clear, no? Friends, please speak out, man. What is the total figure? 30 lakhs. I think you got my working. Friends, कुछ तो बोलो. I'll reduce something called. Why will marginal relief come in this case? Tell me first. Marginal relief will come because extra tax is more than extra income. What is extra tax? 2,42,100. What is extra income? So marginal relief will be 1,42,100. Good. It looks like almost majority of them are perfect in marginal relief. सबको समझ में आ गया ना बेटा marginal relief का लॉजिक? पक्का? अगर एक बात बोलूं क्या ये 1 करोड़ 1 लाख के बोल के ये सब मेहनत करें हम लोग, अगर ये 1 करोड़ 20 lakhs होता, 1 करोड़ 30 lakhs होता, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ आने का सवाल ही नहीं आता.
सिर्फ वो 5-10 लाख के आसपास ही आता है वो फर्क। समझ में आ रहा है क्या आपको? डन। व्हाट इज द फिगर देन? Obviously the figure will be 31 lakhs. To that I will add H is at the rate of 4%, which comes to 1,24,000. And the final answer is 32,24,000. That's it. I'm sure we got good clarity on this question. Margin relief is not new, already we learned. But just that we are applying this in case of tax rate of company. So you have to understand that margin relief is not just for individuals, it's applicable for everybody. जहां पे भी extra tax is more than extra income, वहां पे relief आ जाएगा. That's it. Take it. Is that done? Friends, reply everybody. Good, fair enough. Get back, come on. Question number 5. बोलो बेटा, what is question number 5? Write a short note on income accruing and income due. Sir, do you know the difference between accrue and the word due? First of all, accrue means what? It's accrued earned but not received. Due क्या होता? Outstanding. Income की बात करें ना बेटा. Sir, the meaning of the word is accrue means there is a right to receive. There is a right to, we are talking from income point of view. There is a right to receive. Due means right to enforce the payment. Right to enforce the payment. Example, for an employee, salary is accruing on a daily basis, but it is due only at the end of the month. Correct, no friends? Can an income which has been taxed on accrual basis be assessed again on receipt basis? Obviously no. Once you are paying tax on accrual, again you will not pay tax on receipt, no? दो बार थोड़ी tax pay करेंगे यार. That's a basic common sense. Getting my point, everybody? So start writing the answer. Income accruing means income accruing means income accruing means there is a right to receive. Income accruing means there is a right to receive. There is a right to receive. So clear now? Next line. Income due means income due means there is a income due means there is a right to income due means there is a right to enforce the payment.
Income due means there is a right to what beta? Enforce the payment. Next slide. Example लिखो. Salary is accrued on daily basis. Salary is accrued on daily basis. Salary is accrued on what beta? Daily basis, and it is due. Salary is accrued on daily basis and it is due at the end of the month. Salary is accrued on daily basis and it is due at the end of the month. Clear, friends? Next slide. If an income is taxed on accrual basis, if an income is taxed on accrual basis, if an income is taxed on what beta? Accrual basis, then it cannot be taxed again. If an income is taxed on accrual basis, then it cannot be taxed again. Then it cannot be taxed again on receipt basis. Then it cannot be taxed again on what basis beta? That's it. Are we getting clarity on the spot, everybody? समझ में आ रहा है क्या बेटा सबको? पक्का क्लियर है क्या? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. Describe what average rate of tax and maximum marginal rate under section 210 and section 229C of Income Tax Act. Let me explain that to you. What is the point? So what is the first thing they asked? बोलो बेटा. Average rate of tax. Correct, no? Sir, average rate of tax is nothing but total tax divided by total income into 100. That's all, no sir. That gives what is the average tax what you are paying. If you remember example, one question we solved where I asked you, इतना tax आया, divide by income into 100, check करो कितना परसेंट आ रहा है. आप वो क्वेश्चन में बोले थे तो 42.3% कुछ आ रहा है ऐसा करके. That is nothing but average rate of tax. समझ रहे क्या? One more example. Sir, imagine a person is paying tax under optional tax regime. Optional tax regime. उसका इनकम एक्जैक्टली 10 लाख से. अगर 10 लाख से तो टैक्स कितना आता? 1,12,500. करेक्ट नो? प्लस 4%. कितना आ रहा है बोलो? 1,12,500 प्लस 4%. 1,17,000. That is the tax what he is going to pay on the income of 10 lakhs. Divided by 10 lakhs into 100. It will come into 11.7%. That is called what rate? Average rate of tax. On an average, how much tax is paying? How will you get that figure? Total tax divided by total income into 100 will become your average rate of tax. अरे यार क्या यार इसमें कुछ भी नहीं है ना यार. Friends, sir, one subject fees is 8,000, one subject fees is 16,000, one subject fees is 18,000. If I ask you what is the average fees you paid, how will you calculate? Total fees what you paid divided by number of subjects into 100, whatever it is. Into 100 not required because number of subjects is less. वही तो average fees आ जाएगा ना यार. सेम लॉजिक है इसमें. क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है. दोस्तों क्लियर है क्या? नेक्स्ट और एक पॉइंट क्या पूछो उधर. maximum marginal rate, it refers to highest rate of income tax. Highest rate of income tax normally. What is the highest rate of income tax normally, sir? 30%. Exactly. Don't tell 40%. That is only for foreign company. तो स्पेशल केस है वो. प्लस
सरचार्ज कितना, सरचार्ज एट 37% प्लस HEC at 4%. And the effective rate will be 42.74%. चेक कर लो, डाउट है तो आपको. डोंट टेल सर 30 प्लस 37 67 प्लस 471 आ रहा है ना सर. ऐसे घटिया आंसर मत दो, अभी बंद कर दो. ऐसे हो गया, वो स्टेज क्रॉस कर लिया अपन. अभी क्लियर है क्या एवरीवन, समझा क्या एवरीबॉडी? चलो स्टार्ट राइटिंग. कम ऑन, स्टार्ट द आंसर. एज पर सेक्शन 210, क्वेश्चन में दिए सेक्शन नंबर, क्वेश्चन में देखे ना बेटा अपन सेक्शन नंबर. As per section 210, 10 ब्रैकेट में लिखना है, बराबर है ना. As per section 210, कमा average rate of tax means, average rate of tax means, average rate of tax means total tax, average rate of tax means total tax divided by, don't write divided, you can use formula, divided by total income, correct? No, total tax divided by total income into 100. That's it. Which section all this? 210. Next point. As per section 229C, as per section 229C, as per section 229C, as per section 229C, comma, maximum marginal rate refers to, as per section 229C, comma, maximum marginal rate refers to, maximum marginal rate refers to highest rate of income tax. Maximum marginal rate refers to the highest rate of income tax, that is 30% plus surcharge at 37% plus HEC at what rate, sir? 4%. Bracket. Effective rate is effective rate is 42.74%. Effective rate is 42.74%. That's it. Friends, are we clear with this point, everybody? दोस्तों बोलो. Question number 7 done. Why? Who is an assessee? Who is deemed assessee? Assessee in default. Already learned, no? Question number 8, that is also done. Explain the concept of marginal relief. Marginal relief will apply because of surcharge in case where income is slightly beyond the limit of surcharge. And marginal relief is the difference between extra tax and extra income. Already we learned. Friends, please speak out. Everybody, sir. That's it. That's the end of story for chapter number 1, which talks about introduction to income tax. A very, very important discussion. That's where we had to spend so much of time on a lot of relevant points, which is very important. Are we fully clear with all these points, what we discussed? Totally, my dear friends. Everyone, sir. Chalo, I'll give you 1 2 small questions. Tell me the answer for this. Ready? Ping Pong Limited
Ping Pong Limited, a foreign company. Total income is 13 crores. Compute tax liability. Student is getting one great doubt. So should I calculate under default or optional? क्या बेटा? कंपनीज में ऐसा कुछ है क्या डिफॉल्ट ऑप्शनल? दैट इज ओनली फॉर होम? Individual, HUF, AOP, BOI, AJP. That's it. Come on, quickly calculate tax. 2 minutes, not more than that. 2 मिनट से ज्यादा करने का कुछ है ही नहीं इसमें. हाँ, टर्नओवर से क्या संबंध है सर आपको? टर्नओवर से क्या करना है आपको? टर्नओवर से क्या करना है आपको? वो तो इंडियन कंपनी के रिलेटेड है ना दोस्त. प्लीज करना बेटा. सब 4 सब ऐड कर दिए. क्या है यार? सरसेट ऐड करे, HSC ऐड किए. क्या मैं बोलना क्या एक एक चीज? क्या टू मच है यार. The answer is 5 crores 67 lakhs 84,000. And I hope you will understand how we got this figure. How the tax will be at the rate of 40%, which is nothing but 5 crore 20 lakhs. To that we will add surcharge. At what rate beta? How much it comes to? अच्छा फिगर नहीं पता, डायरेक्ट अपन कैलकुलेटर में निकालिए सब कुछ. 26 lakhs. Total figure 5 crores 21 lakhs. Total figure 5 crores 67 lakhs. That's it. तो क्लियर है ना? ये क्वेश्चन क्यों दिया समझ में आया? ऐसे प्रैक्टिस के लिए दिया मैं. फॉरेन कंपनी अभी भी डिस्कस करे ना, एक बार थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता करके दिया क्वेश्चन में. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. PQR कोऑपरेटिव सोसाइटी. PQR कोऑपरेटिव सोसाइटी. PQR cooperative society is having PQR cooperative society is having total income of 2,15,600. 2,15,600. Compute tax liability. 2,15,600. Compute tax liability.
हो गया बेटा? क्या है आंसर? अप टू 2.5 lakhs नील, तो आंसर इज 0. ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? बोलो क्या करें आप लोग? Up to 10,000 at the rate of 10%, which is nothing but 1,000. बराबर है ना बेटा? 10,000 to 20,000 at the rate of 20%, which comes to 2,000. Friends, above 20,000 at 30%. 680. 61,000. We will add 2,4. $64,150. That's it. सबको क्लियर है क्या बेटा? You understood why I am giving these questions? पक्का? चलो next question. Indian company total income is 10 crore 1 lakh and turnover for previous year 21-22 is equal to 300 crores. Compute tax liability. इंडियन कंपनी बोला ना मैंने, कंपनी. अरे इंडियन कंपनी ABC लिमिटेड, ठीक है क्या? स्टूडेंट बोल रहा है सर लिमिटेड का है. कुछ तो करना है ये क्वेश्चन में. क्या करना है? हाँ चेक कर लो. चलो बेटा, टैक्स एट व्हाट रेट? हाउ मच इज दैट? $25 lakhs. क्या बोल रहे बेटा? 2,50,00,000. Exactly. We will add surcharge at what rate beta? 12%. More than 1 crore does not exceed 10 crores, 7%. More than 10 crores, 12%. अरे ये रिवाइज कराने के लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है यार मैं. कितना बेटा सरचार्ज बोलो? 30 lakhs 3,000. बराबर है क्या? ठीक है, बोलो कितना आ रहा है? 2 crores 80 lakhs 28,000. डायरेक्ट HC ऐड मत करो. HC ऐड मत करो बेटा, अपने को चेक करना है मार्जिनल रिलीफ. अगर 10 करोड़ होता तो टैक्स कितना होता बेटा? 2 crores 50 lakhs. To that we would have added surcharge at what rate? 7%. सरचार्ज आता था बट 7% आता था, 12% नहीं. समझ रहे क्या आप मेरी बात?
Friends, before I tell only, your brain should strike this point. Please, come on, सच्चा 7% कितना है? 17 lakhs total. 2,67,50,000. अब बोलो मार्जिनल रिलीफ आएगा क्या? What is the extra tax, beta? Exactly. What is the extra income? 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया तो 12 लाख टैक्स बढ़ गया यार. इतना टू मच है यार वो. समझ रहे क्या आप? आएगा ना मार्जिनल रिलीफ? कितना है मार्जिनल रिलीफ? 11 lakhs. Difference will be 2 crores 68 lakhs 50,000. बेटा समझ में आया क्या? But to that I need to add HSA at the rate of 4%. How much it comes to? Total for you? ₹2,79,24,000 is the final answer. सर क्लियर? एवरीवन सर? बेटा बोलो पक्का क्लियर है क्या? ऑल ऑफ अस? चलो बेटा फॉर द लास्ट टाइम, कम ऑन, लास्ट टाइम फॉर टुडे, आई मीन कल वापस रिवाइज करूंगा बट फॉर टुडे. चलो बेटा बोलो व्हाट इज सेक्शन 27 एसएससी 29 225A 231 234 section 3 section 4 87A 288B. 288A is rounding off of income. 288B is rounding off of tax. 115BB casual incomes. 115BBJ online games. 115BBE unexplained incomes, unexplained money, unexplained investments, tax at 60%. Such a 25% says 4%. Effective rate 78%. पढ़ाया आज. Good. What is section 172? Shipping business of non-resident. 174. Person leaving India permanently or for long time. 174A. AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. 175. Persons likely to transfer property to avoid tax. 176. Discontinued business. 112. Long-term capital gain general rate. 112A. Equity shares or equity mutual fund. Business trust. STT paid. 111A. Same case. Short term. दोस्तों 80TTA interest on savings bank account, interest on 10,000 whichever is lower. 80TTB interest on savings account or deposit account only for resident senior citizen 60 and above. Interest or 50,000 whichever is lower. If you take TTB you can't take TTA. If you take TTA you can't take TTB. If a person is senior citizen but a non-resident, you can't take TTB, but you can still take TTA. If a person is a what do you call resident but not a senior citizen, TTA but not TTB, because TTB is only for resident senior citizen. What is section 210? Average rate of tax, which is nothing but tax divided by income into 100. 229C, maximum marginal rate, which is nothing but highest rate of income tax. So are we clear with all these sections? That's the end of story for chapter number 1, introduction to income tax. A very, very important topic because we have discussed, one second, let me close, then you close the books. 1 second. Sir, this chapter is very, very important because of 2 reasons. Point number 1, exam में एक question तो पक्का आना है, कोई doubt ही नहीं है उसमें. Any question can come in the exam, including 115BAC default tax regime. Any question can come in the examination. And at the same time, first chapter is like a, what do you call, pillar for the balance topics.
इसलिए फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आर वी गेटिंग क्लैरिटी एवरीबॉडी? सो सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड, finished, completed. Thank you so much. Successfully we have completed first chapter, and next class tomorrow will start with the second chapter called residential status. Are we clear? Thank you so much, my dear friends. Take care. See you all tomorrow. Bye bye. Thank you. अरे 1 मिनट रुको ना यार, वीडियो दिखा देता आपको मैं 2 मिनट का.